निताय गुण मानियामा निताय गुण मानियामा आनिया प्रेमेरा वन्या भाषाइदो अवानी निताय गुण मानियामा निताय गुण मानियामा प्रेमेरा वन्या लोया प्रेमेरे वन्या लोया प्रेमर वन्या लोया निताय आइला गौर देशे ना लोय डूबिलो भकता गाना बिना ही न भासे निताय गुण मानियामा निताय गुण मानी दीना ही न पाते पामा नामा नाही बाचे ब्रह्मरा दुर्लभ प्रेमा सबकार जाचे निताय गुण मानियामा निताय गुण मानी आबद करुणा सिंधु निताय काटिया मोहा घरे घरे बोले प्रेमा आमी यारबा निताय गुण मानियामा निताय गुण मानी लोचन बोले मोरा नित्य
নিতাই জীবনা বাজিল জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হইল নিতাই গুণা মানি আমার নিতাই গুণা মানি Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaurango Jaya Nitai Gaurango Nitai Gaurango Jaya Gaura Hari Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Nityananda Prabhu ki Nityananda Trayodashi Mahamotsav ki Om Agyantimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurulmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yota Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagar Jatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sadivam Sadvitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha Namo Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunvadi Pasyate Desatarane वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो सारे भक्तों से आग्रह करता हूँ कि आशीर्वाद दीजिए ताकि हम कुछ नित्यानंद प्रभु के विषय में कुछ लीलाओं का वर्णन कर सकें।
तो नित्यानंद प्रभु कृपा के अवतार हैं। तो जस्ट अभी मैं भक्ति शास्त्री क्लास दे रहा था, उसमें चैप्टर चल रहा था भाव भक्ति का। तो भाव भक्ति दो तरीके से प्राप्त होती है। एक रेगुलर रास्ता है, जैसे हम लोगों का रास्ता है, साधना भक्ति फिर भाव भक्ति। और दूसरा मार्ग जो है वो है कृपा का मार्ग। तो उसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, एक मार्ग है कि पहले एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद पास हो गए तो सारे सेमेस्टर्स में, तो फिर डिग्री मिल जाती है। तो ये साधारण साधना का मार्ग है। लेकिन दूसरा जो मार्ग है वो है ऑनरी डिग्री वाला मार्ग। आपको कॉलेज वाले बुलाते हैं और डिग्री हाथ में थमा देते हैं, ऑनरी डिग्री तो सबको नहीं मिलती है। तो ये कृपा का मार्ग है जो कि नित्यानंद प्रभु ने आकर इस जगत में प्रसारित किया, दिखाया। तो वो भी तीन तरीके से होती है। एक है शब्दों के द्वारा, दूसरा है देखने के द्वारा, दृष्टिपात द्वारा, और तीसरा है मात्र इच्छा करके। तो जो शब्दों द्वारा है उसमें उदाहरण आता है कि कृष्ण भगवान नारद मुनि से कहते हैं कि आपको हमारी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, तो उनको प्राप्त हो जाती है। ये वृंदावन में आने की बात की कथा है। जहां पर देखने की बात आती है वो किसकी, वो आती है जंगाल। जंगाल के कुछ निवासी थे, वो जब कृष्ण के दर्शन करते हैं, कृष्ण को देखकर ही क्या आ जाता है, भाव आ जाता है। और जो इच्छा शुद्ध भक्तों की या भगवान की इच्छा होती है, उसमें उदाहरण आता है सुखदेव गोस्वामी का। तो भगवान ने इच्छा की कि सुखदेव गोस्वामी को भाव भक्ति प्राप्त हो, और उनको भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु ऐसा ही था, किसी की ओर देखते थे और वो लोग भक्त बन जाते थे। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। इसलिए शास्त्रों में पहले से दिया हुआ था कि नित्यानंद प्रभु प्रकट होने वाले हैं कहाँ, एक चक्र धाम में। तो एक चक्र धाम की कथा सारे भक्तों को वैसे पता है, फिर भी सुनाएंगे। तो जब महाभारत के युद्ध में है, आज से 5000 साल पहले, जब कृष्ण अर्जुन की रक्षा करने के लिए, क्योंकि भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ली थी कि या तो कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। कौन सी प्रतिज्ञा? वानप्रस्थ की प्रतिज्ञा। तो कृष्ण ने वानप्रस्थ धारण कर लिया था और प्रतिज्ञा ले ली थी कि वो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो या तो कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे या फिर अर्जुन को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी। तो भीष्म देव ऐसा भीषण युद्ध करते हैं, कृष्ण को लग रहा था कि अर्जुन नहीं बचेगा। और मान लीजिए अगर कृष्ण अर्जुन को बचा लेते, कृष्ण तो कृष्ण है, कुछ भी कर सकते थे, रथ को ऐसा हाँकते कि भीष्म देव के तीर पहुंचते ही नहीं, तो भीष्म देव की प्रतिज्ञा टूट जाती। तो भीष्म देव ने जो प्रतिज्ञा ली थी वो टूट जाती। तो एक तरफ भीष्म देव की प्रतिज्ञा है, दूसरी तरफ कृष्ण की प्रतिज्ञा है। तो कृष्ण ने सोचा कि मेरी भी दो प्रतिज्ञा हैं। एक प्रतिज्ञा है कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा आ रहा है युद्ध वाला। तो एक तो है कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और दूसरा जो प्रतिज्ञा थी वो क्या थी कि न मे भक्ता परिणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा। तो इसलिए कृष्ण ने अपने स्वयं प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं और सिंह की तरह रथ के पहियों को उठा के, वैसे कृष्ण भी चतुर हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं, रथ का पहिया उठाते हैं। अभी कोई बस का पहिया उठा रहा है तो ये नहीं बोलेंगे आप बंदूक लेके आ रहे हैं, पुलिस केस नहीं हो सकता है। तो रथ का पहिया लेके जाते हैं भीष्म देव को मारने के लिए। लेकिन उसी समय क्या होता है, शंखनाद हो जाता है, युद्ध की समाप्ति हो जाती है। लेकिन भगवान जो शस्त्र उठाते हैं उसको कभी व्यर्थ नहीं गंवाते, इसलिए उसको फेंक देते हैं और वो यहाँ पर एक चक्र में आके गिरता है, क्योंकि एक चक्र की भूमि में परिवर्तित हो जाता है।
तो इसलिए जो एक चक्र धाम है वो साधारण नहीं है, वो भगवान का ही एक अस्त्र है। और वहां पर जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण लोग आज से 800 साल पहले, उन सब लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा था कि यहाँ पर बलराम स्वयं अवतरित होंगे। तो इस तरह से ये कि सारे के सारे ब्राह्मण लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि बलराम कब आएंगे। तो एक तो खुशी थी कि बलराम अवतरित होंगे, लेकिन क्योंकि 300 साल का समय था, उनको समझ में आया कि हमको तो दर्शन नहीं मिलेंगे। और खासकर एक चक्र धाम उस समय जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो ज्योतिष शास्त्र के लिए बहुत पॉपुलर था। तो ज्योतिषी लोग बहुत थे वहां पर, तो सब एक्सपर्ट थे। तो गणना करते हैं यहाँ पे बलराम जी आएंगे 300 साल पहले। प्रभु जी भी एक ज्योतिषी को मिले थे उन्होंने बहुत सारे प्रिडिक्शन दिए थे। अभी भक्त लोग देख रहे हैं कितना सही होगा कितना नहीं होगा। तो ज्योतिषी लोग गणना करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं। तो इस तरह से वो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। पर प्रतीक्षा करते 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 जो आगे की जनरेशन आई वो भी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन करते करते भूल गए कि प्रतीक्षा भी करना था। तो एक समय ऐसा आता है जब वहां पर अकाल की स्थिति पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था अकाल पड़ा हुआ है। और क्योंकि खासकर बंगाल में वो जो जगह है जहां से गंगा नहीं बहती है, उसको राढ़ देश बोलते हैं। मतलब क्योंकि गंगा के पास में जाने से ही व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। स्नान तो दूर की बात है, गंगा से जो हवा बहती है उसके स्पर्श से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो जिन जिन जगहों पर गंगा नहीं बहती है उनको राढ़ देश कहते हैं। जहां जहां बहती है वो गौड़ देश में आ जाते हैं। तो कहते हैं जो पापी लोग हैं वो गंगा से दूर रहते हैं, जो पुण्यवान आत्मा है वो गंगा के पास रहते हैं। लेकिन ये तो इस स्थान पर अकाल पड़ा हुआ था। लेकिन अचानक से एक दिन, जब आज का ही दिन था, आज से 500 साल पहले, अचानक वहां पर रिमझिम बारिश होने लगती है। सारे के सारे तालाब पुकुर भर जाते हैं, उसमें कमल खिलने लगते हैं। जितने भी वहां पर पेड़ वगैरह थे जो भी मुरझाए पड़े हुए थे, उन सब में फूल आ जाते हैं। अचानक से मधुर सुगंधित हवा बहने लगती है। जिन जिन ब्राह्मणों की अग्नि, क्योंकि ब्राह्मणों के घर में सबके यहाँ अग्नि जलती रहती थी, एक तो कुकिंग के लिए और दूसरा यज्ञ के लिए। तो जो लग रहा था कि बुझ गई है, अचानक प्रज्वलित हो जाती है। आकाश में एकदम, आकाश साफ हो जाता है। तो उस समय नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की। तो इस तरह से उनके आते ही क्या हो जाता है, सारे का सारा जो वातावरण है वो बदल जाता है। क्योंकि सारे ग्रह नक्षत्र वो भगवान पर निर्भर करते हैं, भगवान इन चीजों पर निर्भर नहीं करते। जब भगवान राम इस संसार में अवतरित हुए थे, तो दशरथ महाराज ज्योतिषियों के पास गए और ज्योतिषियों से बोलने लगे कि हमारे बच्चे का भविष्य बताइए कि ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। तो ज्योतिषी लोग दशरथ महाराज को कहते हैं कि दशरथ महाराज, ग्रह नक्षत्र आपके बच्चे का भविष्य निर्धारित नहीं करेंगे, आपका बच्चा ग्रह नक्षत्रों का भविष्य निर्धारित करेगा। वो जब प्रकट होगा सारे ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, अच्छे हैं, वो स्टैंडर्ड। तो इस तरह से जहां भगवान आते हैं वो अपने आप ही कैसा हो जाता है, पावन समय हो जाता है। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु समय आते हैं। जैसा कि हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कब प्रकट हुए, पूर्णिमा। हाँ, लेकिन उस समय ग्रहण था। ग्रहण को अपशकुन माना जाता है। अभी वैसी गणना अगर हम देखेंगे किसी के बर्थ चार्ट में ग्रहण लगा हुआ है, तो बोलेगा यार बड़ा खराब भविष्य है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो डर के मारे सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ।
और जब भगवान का नाम होता है जहां पर, तो ग्रहण के समय अगर कोई हरि नाम ले रहा है तो साधारण समय से 1000 गुना ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए जहां भगवान का नाम है, जहां चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरि नाम के रूप में प्रकट होते हैं, जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं वो चैतन्य महाप्रभु है, राधा रानी और कृष्ण। हरे राम में राम कौन है? प्रभुपाद बोलते हैं नित्यानंद राम। तो जहां वो प्रकट होते हैं, वो स्थिति कितनी भी खराब हो अच्छी हो जाती है। साधारणतः एकादशी को भी खराब कहा गया है, अगर आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल गणना से देखेंगे। लेकिन फिर भी एकादशी को वैष्णव लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा दिन है। वो क्यों है? क्योंकि जप करने में 1000 गुना ज्यादा फायदा मिलता है। एक माला करेंगे एकादशी को ज्यादा लाभ है साधारण दिनों से। तो जो कितनी भी खराब चीज क्यों ना हो, अगर भगवान जहां प्रकट होते हैं वो अपने आप अच्छी हो जाती है। तो इसलिए जैसे ही नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं, तो वही एक चक्र धाम जो अभी रेगिस्तान जैसा बना हुआ था, वो एकदम मनोरम हो जाता है। स्वर्ग से भी बढ़कर सारा वातावरण हो जाता है। और अचानक से सब लोगों को कृष्ण प्रेम जैसा लगता है हृदय में, कि अभी साधारणतः एकदम कृष्ण की इच्छा, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा कैसे प्रकट हो रही है। और उसी समय नित्यानंद प्रभु आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु सांवले रंग के हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु सुनहरे रंग के हैं, नित्यानंद प्रभु सांवले रंग के। वैसे कहीं कहीं बोला गया सुनार पर्वत सोने का भी बोला गया, लेकिन कई आचार्यों ने बताया कि वो सांवले रंग के, चैतन्य भागवत में बताते हैं। और जैसे ही वो प्रकट होते हैं, समझ में आ जाता है कि भगवान प्रकट हुए हैं। क्योंकि हमारे जैसे छोटे बच्चे जब प्रकट होते हैं तो ब्रह्मचारी जैसे ही प्रकट होते हैं, गंजे होते हैं, छोटे छोटे रुए होते हैं लंबे बाल नहीं होते। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए तो उनके लंबे लंबे घुंघराले बाल थे जो कंधे तक आ रहे थे, एकदम चौड़ा माथा, आंखें बड़ी बड़ी मान लीजिए कमल जैसी हों और कान को छू जा रही हों, कान एकदम समान, नाक एकदम चंपा के फूल जैसी, गाल एकदम गुलाबी। कोई कहीं वो गए नहीं थे मेकअप कराने के लिए, फिर भी गुलाबी थे। लाल लाल होंठ, गर्दन थोड़ी छोटी, लेकिन उसमें शंख के जैसे, शंख में जैसे निशान होते हैं वैसे निशान थे। लंबे लंबे हाथ जो कि घुटनों के नीचे जा रहे थे, अजानुलंबित भुजो, एकदम सिंह जैसी जैसा सीना, गहरी नाभि, और केले के पत्ते जैसा उनका उदर था पेट। शक्तिशाली जांघें, मान लीजिए पूरी शक्ति उनमें संचारित हो रही हो। और हाथ और पैरों में विशेष चिन्ह थे। और जैसे ही वो प्रकट हुए, उनको देख के हड़ाई पंडित और माता पद्मावती पूर्ण रूप से उनसे आसक्त हो गए। तो वो आसक्त हो गए, लेकिन साथ में उनको बहुत चिंता भी हो रही थी। उनको चिंता हो रही थी कि इस बच्चे की हम सेवा कैसे करेंगे। क्योंकि नित्यानंद प्रभु का शरीर इतना कोमल था कि हड़ाई पंडित बाजार में जाके सारे उन्होंने कपड़े देखे, लेकिन सारे जो कपड़े थे वो नित्यानंद प्रभु के शरीर से कैसे थे? ज्यादा हार्ड थे, उससे ज्यादा कठोर थे। तो उनको चिंता हो रही थी अगर शरीर में लगेगा तो उसको दर्द होगा। फिर वो लोग उनके शरीर में सुगंधित तेल लगाना चाह रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के शरीर से इतनी ज्यादा सुगंध आ रही थी कि सारे तेल लग रहे थे, मान लीजिए बदबू आ रही हो, तो तेल ही नहीं मिल रहा था बाजार में। माता पिता की दुविधा। जब उनको वो कुछ गहने पहनाना चाह रहे थे, तो गहने उनके शरीर में ज्यादा सुंदर दिख रहे थे, उनकी सुंदरता से वो सुशोभित हो रहे थे। कौन? नित्यानंद प्रभु नहीं, गहने। भूषण भूषणांगम। तो इसलिए माता पद्मावती को चिंता भी बहुत हो रही थी, क्या होगा, हम बच्चे कैसे लालन पालन करेंगे, कैसे उसको बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे। तो पद्मावती कुंड अभी भी आप जाएंगे, जो स्थान है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु अवतरित हुए थे, तो वो स्थान भी एक चक्र में है। उसके बगल में ही पद्मावती कुंड है, जहाँ पर माता पद्मावती नित्यानंद प्रभु को नहलाया करती थी।
और जैसे ही नित्यानंद प्रभु धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, तो बच्चों जैसे जैसे बच्चे लोग घर में रहना पसंद नहीं करते, खासकर लड़के लोग कई लोगों का अनुभव होगा, सुबह जाते हैं खेलने, शाम को वापस आते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु शाम को भी नहीं आते थे। लेकिन वो खेलते नहीं थे, वो क्या करते थे, ड्रामा करते थे, कृष्ण लीला के अलग अलग ड्रामा। तो इस तरह से वो हमेशा नित्य आनंद में रहते थे, क्योंकि हमेशा कृष्ण की लीलाओं को याद करते रहते थे। तो अगर आनंद में रहना है तो कृष्ण में डूबना पड़ेगा, कृष्ण में नहीं डूबेंगे तो फिर आनंद नहीं। तो दिन भर ड्रामा करना, अलग अलग ड्रामा। और लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि ये स्क्रिप्ट कहाँ से लेके आता है। गुरुकुल कभी गया नहीं है, कभी कुछ सुना नहीं है, तो कहाँ से ये स्क्रिप्ट लेके आता है ड्रामा की। तो एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति पूछने भी लगा कि नित्या है, तुम इतने सारे जो ड्रामा करते हो, स्क्रिप्ट कहाँ से आती है। तो निताई बोले कि स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है, तो हमारी लीला है। उसको भी समझ में नहीं आई कैसी लीला है, अद्भुत लीला है। और जो ड्रामा करते थे वो राइट टाइम पे ही करते थे। अगर कृष्ण कब अवतरित हुए, रात को 12 बजे, तो ड्रामा भी रात को 12 बजे ही होगा। मतलब आपको एटलीस्ट हमारा वो नहीं है, मतलब अभिषेक जो हम कर रहे हैं वो 12 बजे नहीं कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु को एकदम जिस समय जो लीला हुई है उसी समय वही लीला करनी है। और एक चक्र में एक नदी भी बहती है, तो वहां पर आ, उसको पार करेंगे रात को 12 बजे। वो यमुना है, उसको भी यमुना कहते हैं, यमुना से अभिन्न है। तो यमुना के एक तरफ मथुरा बनाया गया, दूसरी तरफ गोकुल बनाया गया, कंस का कारागार बनाया गया। फिर बच्चे लोग रात को 12 बजे कृष्ण को लेके आते हैं, पार कराते हैं। तो सारा का सारा जो ड्रामा है एकदम टाइम पे होना चाहिए। और अलग अलग ड्रामा, कुछ तो ड्रामा बहुत खतरनाक भी थे, जैसे कालिया लीला। अब कालिया लीला में जो लोग बहुत पहले गए हैं, 2004-5 में, प्रभु जी को याद होगा, वहां पे नावी पोद्दार के पास में कुछ वृक्ष थे ताल के, अभी वो काट दिया है उनको। तो ऐसे लगते हैं जैसे मान लीजिए कोई सांप के फन हो। तो अगर कालिया लीला करनी है तो उसके ऊपर नाचना है काफी डेंजरस है। तो ये सारे के सारे वो लोग ड्रामा किया करते थे। और बाकी सब जो लोग थे, घर के लोग, उनको भी चिंता नहीं होती थी कि रात रात भर हमारे बच्चे निताई के साथ में क्या कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। अगर नित्यानंद प्रभु के साथ ड्रामा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, सब निताई के साथ में। वैसे हड़ाई पंडित और पद्मावती हमेशा देखते रहते थे कि ज्यादा दूर ना जाएं, तो उस तरह से वो लोग अलग अलग ड्रामा करते थे। और एक जो ड्रामा बहुत फेमस है वो है रामायण का ड्रामा। और रामायण के ड्रामा में वो लक्ष्मण का रोल करते थे। जैसे अब कृष्ण का ड्रामा हुआ करता था, खासकर माधुर्य लीला वाला, तो वो कौन सा रोल करते थे, गोपियों का। कृष्ण का रोल नहीं करते थे, गोपियों का रोल करते हैं, क्योंकि वो भक्त के भाव में हैं, तो वो भक्ति का प्रदर्शन करते थे उसमें, गोपियों का रोल करते थे। लेकिन जब रामलीला होती थी तो लक्ष्मण का रोल कर रहे थे वो। और लक्ष्मण के रोल में जैसा होता है, जब इंद्रजीत आता है और शक्ति शिला फेंकता है, तो वो एक बच्चा कमल लेता है और कमल को शक्ति शिला बना के ऐसे फेंकता है नित्यानंद प्रभु के ऊपर, और नित्यानंद प्रभु बेहोश हो जाते हैं, और फिर सांस भी नहीं आती है। और जो बच्चा था, जिसने शक्तिशिला, जो इंद्रजीत बना हुआ था, जिसने शक्तिशिला फेंकी थी, वो रोना चालू कर देता है। बोले हमको पता नहीं था कि कमल फेंकने से भी मर्डर केस हो जाता है। सांस भी नहीं आ रही है, मूर्छित हो गए हैं। तो वो रोना चालू करता है, और फिर धीरे धीरे करके सारे बच्चे रोना चालू कर देते हैं। बोले बेहोश होना था, ये क्या हो गया। तो जब वो जोर जोर से रोते हैं तो पहले बाकी लोग सोचते हैं कि शायद ड्रामा कर रहे होंगे, कुछ से बाद समझ में आता है कि नहीं, तो ये तो ड्रामा नहीं है, कुछ अलग है, आवाज कुछ अलग है।
तो फिर उसके बाद में आसपास के जो लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी रोने लगते हैं। हड़ाई पंडित पद्मावती को के पास खबर पहुंचती है, वो लोग भी सुन के मूर्छित हो जाते हैं। तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं, अरे नेता इतनी जल्दी छोड़ के हमको चला गया। तब एक वहां बुजुर्ग व्यक्ति था, उसको नित्यानंद प्रभु की एक्टिंग में पूरा भरोसा था। आज शायद नित्यानंद प्रभु होते तो सारे ऑस्कर अवार्ड उन्हीं को मिलते। तो वो पूछने लगा कि आगे की स्क्रिप्ट क्या है। तो फिर एक बच्चे को स्क्रिप्ट याद आई। बोला अरे हनुमान जी को वो लेके जाना था, लेने जाना था संजीवनी बूटी। तो बोले यार लेके आओ जाओ। तब बच्चे को याद आया। तो एक बच्चा हनुमान बन के गया संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए। और समय वैसे ही हुआ, एक जगह स्नान करता है जाके, वहां पे मगरमच्छ उसको पकड़ लेता है, वो मगरमच्छ को मारता है, आगे आता है। संजीवनी बूटी नहीं मिलती तो पूरा पहाड़ी उठा के लेके आ जाता है। और फिर जो बच्चा सुसेन बना हुआ था, वो उसमें से एक जड़ी बूटी लेके जैसे नित्यानंद प्रभु के नाक के सामने रखता है, नित्यानंद खड़े हो जाते हैं, हरि बोल। सब लोग कहते हैं बाप रे। बंगाल वैसे भी एक्टिंग के लिए मशहूर है, लोग सुपर एक्टिंग करते हैं, खासकर जब प्रसाद खिलाने में लगे रहते हैं। एक बार मेरे को याद है, एल्बर्ट रोड में हम लोग के सामने जो पुकुर है, तब मैं खड़गपुर में पढ़ाई कर रहा था। तो उस समय सेवा मिली थी, कोई पीछे के रास्ते से नहीं आना चाहिए खिचड़ी लेने के लिए, आगे के रास्ते से ही आना चाहिए। पीछे खड़ा हुआ था, तो एक माता जी आई, वो बोले कि मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, थोड़ा प्रसाद दे दो। हमने कहा माता जी आपको दे देंगे, लेकिन पीछे और भी लोग हैं, तो आप थोड़ा रुक जाओ, हम आपको प्रसाद देते हैं। तब तक एक और दूसरी माता जी आई, वो काफी यंग थी। वो कहने लगे ओ पोड़े गच्छी। मैं क्या हुआ? करपू अनेक बताओ अच्छे, तो लाइन में खड़ी नहीं हो सकती, ये है वो है। तो मैं बोला कि ठीक है भाई, दे देते हैं प्रसाद। तो मैंने कुछ खिचड़ी का प्रसाद लेके दिया। जैसे ही प्रसाद मिला, पैर ठीक हो गया, मुस्कुरा के बोली हरि बोल, धन्यवाद प्रभु। मैंने कहा बाप रे क्या एक्टिंग है। लेकिन नित्यानंद प्रभु जैसी एक्टिंग नहीं है किसी की। तो सब लोग बड़े अचंभित हो जाते हैं। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु अलग अलग ड्रामा करते थे वहां पर। और इस तरह से दिन साल बीतते जा रहे थे, और लोग इतने खुश थे कि किसी को ध्यान ही नहीं था कि कुछ अपशकुन हो सकता है। और अचानक एक दिन होता है, एक समय जब नित्यानंद शायद 7 साल के थे, किसी 7 years ओल्डर ना, कि 12 साल के थे, 12 years, 12 साल के। तो जोर से वो गर्जना करने लगते हैं। सबको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया, इसका मूड थोड़ा सा सिंह का रोल कर रहा है क्या, गर्जना क्यों कर रहा है। तो उस समय नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, इसलिए वो जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। और फिर कुछ समय बाद ही नित्यानंद प्रभु को समझ में आ जाता है कि चैतन्य महाप्रभु अभी लीला प्रारंभ करने वाले हैं। तो वो भी चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा की जाए। तो कुछ समय पश्चात ही वहां पर एक सन्यासी आता है हड़ाई पंडित के घर में। हड़ाई पंडित सन्यासी को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कई बार आजकल लोग प्रसन्न नहीं होते, बंगाल में कल्चर बदल गया। सन्यासी सीट में बैठा हुआ है तो उसको उठा देते हैं, दूसरों के लिए कृपा करना चाहिए, उठ जाइए। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो हड़ाई पंडित जब सन्यासी को देखते हैं तो सन्यासी को देखकर उसकी सेवा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं उसके साथ में। दोनों लोग कृष्ण कथा में बहुत मग्न रहते हैं। और उसके बाद में वो सन्यासी जब जाने लगता है, तो हड़ाई पंडित कहते हैं कि हम आपकी कोई और सेवा कर सकते हैं क्या। तो सन्यासी बोला सेवा तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो हम मांगेंगे साथ दे नहीं पाएंगे। तो वो हड़ाई पंडित कहते हैं नहीं नहीं नहीं,
एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि जो जो सन्यासी मांगे उसकी सेवा करनी चाहिए। तो सन्यासी कहता है सोच लीजिए, बोले मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ जो भी आप बोलेंगे हम पूरा करेंगे। तो सन्यासी कहने लगा कि देखो मैं बुजुर्ग हो गया हूँ और मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, तो आपका जो बेटा है निताई, उसको हमको असिस्टेंट के रूप में दे दीजिए। जैसे ही हड़ाई पंडित वो सुनते हैं ऐसा लगता है मान लीजिए वज्रपात हो गया हो। और हड़ाई पंडित बेहोश हो जाते हैं। फिर उनको होश आता है तो मन में थोड़ा सा भ्रम आ जाता है। लेकिन भक्तों के जीवन में जब भी भ्रम आता है तो वो गुरु साधु शास्त्र उसको रेफर करते हैं। तो वो उनको याद आता है कि जब यही समस्या दशरथ महाराज के सामने आई थी तो उन्होंने क्या किया था। जब दशरथ महाराज से विश्वामित्र मुनि ने राम लक्ष्मण को मांगा था कि आप राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो राक्षस हैं वो यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं और उनको मारने के लिए हमको राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। तो दशरथ महाराज मना कर देते हैं। दशरथ महाराज कहते हैं पहले तो अरे वो तो अबोध बालक हैं 12 साल के, वो क्या भला युद्ध करेंगे। आप बोलिए तो मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं अपनी पूरी सेना लेके जाऊंगा और सारे राक्षसों का वध कर दूंगा। विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि देखिए दशरथ महाराज, आपके यहाँ की परंपरा है कि व्यक्ति जो प्रतिज्ञा लेता है वो अपने शब्दों को वापस नहीं लेता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। प्राण चले जाएंगे लेकिन जो बोला है उसको कभी वापस नहीं लेंगे। तो आप नहीं प्रतिज्ञा पूरा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि वहीं पर बैठे हुए थे। वशिष्ठ मुनि, वैसे विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि की बहुत विशेष संबंध है दोनों का, बहुत बार युद्ध कर चुके हैं एक साथ एक दूसरे के साथ। पर यहाँ वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज को कहते हैं दशरथ महाराज आप चिंता मत करिए, विश्वामित्र मुनि अकेले चाहें तो सारे राक्षसों को मार सकते हैं, उनका वध कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो क्रेडिट देना चाहते हैं राम और लक्ष्मण को, उनको श्रेय देना चाहते हैं, इसलिए वो राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं। और फिर उसके बाद में दशरथ महाराज राम लक्ष्मण को दे देते हैं। तो फिर हड़ाई पंडित सोचते हैं कि शायद हमको भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए, भले ही ये हमारे लिए बहुत ज्यादा दुख का कारण बनने वाली है। लेकिन उससे पहले वो पद्मावती से बोलते हैं, पद्मावती भी सुनती हैं तो वो भी बेहोश हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो फाइनल है। तो उस तरह से वो नित्यानंद प्रभु को उस सन्यासी को दे देते हैं। और नित्यानंद प्रभु खुशी खुशी उस सन्यासी के साथ में जाने लगते हैं, पीछे एक भी बार मुड़ के भी नहीं दिखते हैं। ये देखकर हड़ाई पंडित और पद्मावती और भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो वो उस ओर देखते रहते हैं जहां से वो सन्यासी जा रहा था, और सन्यासी के जाने के बाद भी उस ओर देखते रहते हैं जब तक नित्यानंद प्रभु और वो सन्यासी ओझल नहीं हो जाते हैं आंखों से। तब तक बाकी लोग आते हैं, बोलते हैं हमने सुना कि निताई चला गया वो सन्यासी के साथ। तब उनको होश आता है अरे हाँ वो तो चला गया। वो कहते हैं कि अरे आपने निताई को जाने क्यों दिया, आप बोलते तो हम अपने बच्चे दे देते। क्योंकि निताई तो सिर्फ हमारी आत्मा नहीं है या आपकी आत्मा नहीं है, वो तो पूरे एक चक्र की आत्मा है। तो पूरा एक चक्र बिना निताई के रह नहीं सकता है। तो आप कैसे दे सकते हैं निताई को। फिर हड़ाई पंडित को भी समझ में आता है, बोलते अरे क्या कर दिया हमने, हम नित्यानंद प्रभु को कैसे भेज सकते हैं। तो कहते हैं कि सारे सब लोग बोलते हैं आप चिंता मत करिए, हम निताई को और सन्यासी को सब जगह ढूंढ के लाएंगे और किसी तरह से हम उनको वापस लेके आएंगे। खैर कुछ वहाँ पे जो लोकल लेजेंड्स हैं, जब हम लोग गए थे तो लोकल के कुछ भक्त बता रहे थे कि उन्होंने एक विग्रह दी थी नित्यानंद प्रभु ने उस समय हड़ाई पंडित और पद्मावती को। मुरली कृष्ण, हाँ मुरलीधर मुरलीधर। तो जब विश्राम घाट में जहाँ पर नित्यानंद प्रभु विश्राम करते थे, मैं वहाँ क्लास दे रहा तो एक माता जी आई, वो विग्रह को लेके आ गई, डीटी को लेके आ गई मंदिर। तो वो डीटी वहीं पर है।
लेकिन वो सब जगह ढूंढते हैं, यहाँ वहाँ बाजार में, यहाँ वहाँ, कहीं भी नित्यानंद प्रभु दिखते नहीं। तब उनको समझ में आता है कि नित्यानंद प्रभु वहां से चले गए। सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके, और हड़ाई पंडित पद्मावती अभी भी उस ओर देखते रहते थे, इस आशा के साथ कि नित्यानंद प्रभु वापस आएंगे। तो सुबह बैठ जाते थे, शाम तक प्रतीक्षा करते रहते थे, उस ओर देखते रहते थे। कभी कभी उनको लगता था कि अरे नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं, समझ में आता था ये तो आभास है, वो नहीं। और इस तरह से नित्यानंद प्रभु के विरह में हड़ाई पंडित पद्मावती वो अपना देह त्याग देते हैं। और लोग भी उस मार्ग से जब जाते थे, उस रास्ते से जहां नित्यानंद प्रभु ने अलग अलग लीलाएं की हैं, उसको देख के उनको भी बड़ा कष्ट होता था। तो वो लोग भी उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। और वैसे बहुत सारी लीला हुई हैं उधर पे। एक चक्र में एक लीला हुई है कि आ, एक सांप था वहां पर, जिसको नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, उसको सबड्यू करते हैं, कंट्रोल में करते हैं। तो एक चक्र में भी और सारी लीला है, लेकिन क्योंकि हम लोग और भी लीला कवर करना चाहते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में जाएंगे। तो इस तरह से एक चक्र का जो वो शहर था, जो भरा हुआ था, सारे सारे ज्योतिषी वहां पे थे, इतने सारे लोग थे, सब लोग एक एक करके एक चक्र को छोड़ के चले जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु की जो अर्धांगिनी है जानवा माता, जब वो सारे भक्तों के साथ वहां जाती हैं, तो देखती है वहां पर पूरी बंजर भूमि थी, कोई वहां रहता नहीं था। उस समय तक सब लोग वहां पर उसको छोड़ के चले गए थे। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु वहां से जाते हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु सन्यासी के साथ में अलग अलग धाम में भ्रमण करते हैं, पूरे भारत में भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु प्रचार नहीं करते हैं। प्रचार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अभी तक चैतन्य महाप्रभु का आदेश नहीं हुआ था। तो सब जगह वो देखते हैं कृष्ण नहीं है, मतलब कृष्ण भावना कहीं नहीं है भारत में, लेकिन कहीं प्रचार नहीं करते हैं क्योंकि आदेश नहीं मिला था। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु जो हैं, वो हमेशा अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का सेवक ही समझते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे हम वही करेंगे। सॉरी प्रभु की, would you like to speak something? So sorry, Prabhu is Prabhupada disciple, very senior devotee. I seek his blessings. Yesterday also we saw, I was there in the attending the Bhakti Vedanta presentations. So there also Prabhuji was hearing along with his wife. So Prabhu is epitome of humility. Although we are new fights, Prabhu likes to hear. So with his blessings we will start. तो फिर क्या होता है, फिर वहां पे वो एक चक्र धाम छोड़ के नित्यानंद प्रभु वहां से चले जाते हैं। और उस सन्यासी के साथ सारे भारत में, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। और भ्रमण करते करते जब वो पंढरपुर में आते हैं, तो पंढरपुर में चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई हैं, उनका क्या नाम है, विश्वरूप। तो विश्वरूप वहां पर नित्यानंद प्रभु में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो भी बलराम की ही एक अंश है। तो वहां पर पंढरपुर में वो प्रवेश करते हैं नित्यानंद प्रभु के शरीर में। और वहीं पर उनकी भी दीक्षा भी होती है। उनके गुरु का नाम था लक्ष्मी तीर्थ। तो लक्ष्मी तीर्थ से वो दीक्षा प्राप्त करते हैं। तो लक्ष्मी तीर्थ से जब वो सो रहे थे, सपने में बलराम जी उनको प्रकट होते हैं। और बलराम जी उनको आदेश देते हैं। और फिर बलराम जी को वो देखते हैं, वो बलराम जी नित्यानंद प्रभु में परिवर्तित हो गए। तब वो लक्ष्मी तीर्थ को बलराम जी कहते हैं, आदेश देते हैं कि आप जो ये निताई है वो मेरे साथ भिन्न है, मैं ही हूँ, तो आप कल मुझे दीक्षा दीजिए। और इस तरह से वो अपने ही जो आराध्य देव हैं बलराम जी, जो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, उनको दीक्षा देते हैं।
और फिर उनकी ही विरह में देह त्याग देते हैं। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु वहां पर आते हैं, गोवर्धन में आते हैं, और गोवर्धन में उनकी भेंट होती है माधवेंद्रपुरी से। जैसे ही माधवेंद्रपुरी उनको देखते हैं, तुरंत इनको गले लगा लेते हैं। तो तुरंत उनको, नित्यानंद प्रभु को गले लगा लेते हैं, और दोनों दोनों के आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, शरीर में रोमांच उत्पन्न होने लगता है, और कई दिनों तक वो लोग कृष्ण कथा करते हैं। सॉरी प्रभु की। तो इस तरह से वो दोनों के दोनों कई कई दिनों तक कृष्ण कथा करते हैं। और कृष्ण कथा करने के बाद जब नित्यानंद प्रभु को लगने लगता है कि महाप्रभु गया गए हैं, गया से वापस आए हैं, कृष्ण प्रेम प्रकट किया है, अब वो प्रचार करने की मूड में आ गए हैं, अब उनको मेरी आवश्यकता है। तो तुरंत नित्यानंद प्रभु नवद्वीप के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, वहां से आने लगते हैं। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु को समझ में आ जाता है कि नित्यानंद प्रभु आने लगे हैं, आने वाले हैं। तो वो सारे भक्तों को बोलते हैं, कहते हैं कल मैंने एक विशेष व्यक्ति को देखा था, श्याम वर्ण था उसका, सांवला कलर, लंबी लंबी भुजाएं थी, उसके हाथ में गदा और हल था, और वो घर के बाहर आता है और पूछने लगता है, क्या ये निमाई पंडित का घर है? क्या ये निमाई पंडित का घर है? क्या ये निमाई पंडित का घर है? और सारे भक्त कहने लगते हैं कि उसके बाद में वो व्यक्ति अंदर आता है। तो हमको लगता है ये जो विशेष व्यक्ति है, ये जो अवधूत है, वो कहीं नवद्वीप में आ गया है, उसको ढूंढ के लाइए। तो नीले रंग की धोती पहनी हुई है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, कमल जैसी आंखें हैं, तो उसको ढूंढ के लाइए। तो सारे भक्त पूरे नवद्वीप में जाते हैं, बाजार में, घाट में, यहाँ वहां ढूंढते रहते हैं, कहीं भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो भक्त है, ये जो व्यक्ति है, ये बहुत विचित्र है, तो हम उसको ढूंढ के लेके आएंगे। तो वो सारे भक्तों को लेके जाते हैं, और कहाँ जाते हैं? नंदनाचार्य घर में। नंदनाचार्य का जो घर है वो कुछ तो विशेष है, लगता है कुछ वहां पे गुफा वुफा होगी कुछ तो, अभी तो नहीं है, क्योंकि अयोध्याचार्य भी वहीं छुपे थे, नित्यानंद प्रभु भी वहीं छुपे थे, और चैतन्य महाप्रभु भी एक बार एक लीला में वहीं छुपते, कोई छुपने का स्थान था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे ही वहां लेके जाते हैं, वहां पर नित्यानंद प्रभु दिखाई देते हैं। और पहली बार इस लीला में जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक दूसरे को देखते हैं, तो देख के ऐसा लगता है जैसे मूर्ति बन गए हो, विग्रह बन गए, जैसे यहाँ पे खड़े हुए। खैर यहाँ एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, सबको कृपा दे रहे हैं, पर वहां एक दूसरे को देखते एकदम स्तब्ध हो जाते हैं दोनों के दोनों। और फिर कुछ समय बाद वो जब एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं, शरीर में रोमांच होने लगता है, और फिर सारे भक्त लोग वहां कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे यहाँ निताई गौरांग नृत्य कर रहे हैं, गौरांग प्रभु और गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों दोनों नृत्य करने लगते हैं। और नृत्य करते करते वो ऐसी छलांग लगा रहे थे, मान लीजिए पैर कान को छू जाएंगे। जो श्री वैष्णव आचार्य लोग हैं, वो इसका प्रिडिक्शन करते हैं, कहते हैं एक समय आएगा जब पूरे संसार में कृष्ण भक्ति फैल जाएगी, और भक्त लोग कीर्तन करते करते ऐसे नाचेंगे, मान लीजिए पैर कान को छू रहे हैं। तो दोनों दोनों ऐसा नृत्य करते हैं।
और नृत्य करते करते फिर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की गोद में लेट जाते हैं। तब वहां पर शिवा ठाकुर कहते हैं उल्टा हो गया है सब कुछ। बोले उल्टा हो गया? क्या उल्टा हो गया? क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है? शेष, अनंत शेष। और चैतन्य महाप्रभु विष्णु। चैतन्य महाप्रभु विष्णु के रूप में अनंत शेष पे लेटते हैं, पर यहाँ क्या हो रहा था? अनंत शेष चैतन्य महाप्रभु मतलब भगवान विष्णु की गोद में लेटे हुए थे। तो बोले इन्वर्जन हो गया, उल्टा हो गया। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की गोद में लेटे हुए। और इस तरह से सारे भक्त लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि निताय, कल हम क्या करेंगे? कल तुम्हारा व्यास पूजा होगी, तो तुम कहां पर व्यास पूजा करने जाते हो या फिर किसके द्वारा? तो बोलते हैं कि श्रीवास ठाकुर अरेंजमेंट करेंगे। तो श्रीवास ठाकुर को अरेंजमेंट का अवसर मिलता है। और श्रीवास ठाकुर बोलते हैं देखिए जो जो सामग्री चाहिए वो हमारे पास है। घड़े चाहिए ना, कुछ घास चाहिए, चंदन, ये वो जो भी चाहिए वो सब हमारे पास है। सिर्फ हमारे पास पुस्तक नहीं है, पुस्तक बस लेके आना है बाजार से। और वो नित्यानंद प्रभु को वहीं पे बुला लेते हैं अपने घर में। जब नित्यानंद प्रभु वहां पर आते हैं तो श्रीवास ठाकुर प्रतीक्षा कर रहे थे कि अगले दिन सब कुछ अरेंजमेंट हो गया है, बस व्यास पूजा करनी है। बुक भी लेके आ जाते हैं। जब बुक लेके आते हैं तो देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने एक्सटेसी में आके सारे के सारे घड़े फोड़ दिए। बोले कि बाप रे ये सब लीला प्रारंभ हुई है। तो फिर वो घड़े लेके आते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु प्रेम में रहते थे, उनको कुछ होश नहीं था। जैसे प्रभु जी बता रहे थे अवधूत है। फिर अगले दिन वो नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि निताय जाके स्नान करके आइए। तो नित्यानंद प्रभु स्नान करने जाते हैं गंगा में, और गंगा में बहुत सारे मगरमच्छ थे वहां पे। तो जब वो मगरमच्छ को देखते हैं तो मगरमच्छ के ऊपर कूद जाते हैं, मगरमच्छ से खेलने लगते हैं। सारे भक्त बोलते हैं ये तो बहुत खतरनाक खेल है। तो भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी बाहर आ जाइए। और नित्यानंद प्रभु यहाँ खेलने में लगे हुए थे। बोले व्यास पूजा का टाइम हो रहा है, तुम मानते नहीं है। और सब लोग डरे हुए थे, तो पास में भी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि मगर ने उन मगर से वो खेल रहे हैं, मगर हमारे साथ खेलने लगेगा। तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु के पास में जाते हैं, कहते हैं कि अरे नित्यानंद प्रभु ये क्या लीला कर रहे हैं, आप भी कुछ करिए। और चैतन्य महाप्रभु तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं निताय बाहर आओ। तुरंत नित्यानंद प्रभु दौड़ के बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा होने वाली थी। तो वो नित्यानंद प्रभु को माला देते हैं और कहते हैं कि इनको व्यासदेव को पहनाइए। नित्यानंद प्रभु हिलते नहीं है। तो बोलते हैं माला पहनानी है, माला। वो हिलते नहीं। तो वो देखे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निताय माला पहनानी है। और नित्यानंद प्रभु उनको ही माला पहना देते हैं, क्योंकि वो सिद्ध करना चाह रहे थे कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो व्यास देव की भी कौन है? आदि हैं। व्यास देव उन्हीं से आए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु सीधे उनके गले में मार डाल देते हैं। और फिर इस तरह से व्यास पूजा होती है, फिर कीर्तन होता है, नृत्य होता है। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु वहीं चैतन्य महाप्रभु के साथ में नवद्वीप में रहने लगते हैं। तो जो जगह मदा की लीला है ऑलरेडी प्रिंस कपूर ने कवर की। तो जगह लीला मदा की लीला होती है। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर सब जगह जाकर घर घर जाके प्रचार करते हैं। तो उन्होंने कवर किया काफी सुंदर तरीके से। और फिर उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बताते हैं। खैर कुछ और नवद्वीप में भी लीला हुई, एक दो लीला और बता देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु रहते कहाँ पर थे? श्रीवास ठाकुर के घर में रहते थे। तो जब वो श्रीवास ठाकुर घर में रहते थे तो वहां भी अजीब वगैरह लीला करते थे। कभी भी अपने कपड़े उतार लेंगे, क्योंकि वो बच्चे के अपना वो तो गोप बेस में थे। छोटे छोटे बच्चे आपने गांव में देखा कभी, और नहीं पहनते। तो लोगों को लगता है तो बाप रे क्या कर रहे हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु को समझना बड़ा मुश्किल है।
तो एक बार चैतन्य महाप्रभु उनको कहने लगे कि निताय, तुम एक गृहस्थ के घर में रह रहे हो, ठीक है, अब दूध वेश है लेकिन कुछ तो शराफत से रहना चाहिए। तो अभी हम आपको अपने घर में लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसी लीला मत करना। तो नित्यानंद प्रभु बोलते मैं तो सब हूँ, मैं ये सारी हरकतें नहीं करता हूँ। जो करता है उसी को लगता है कि दूसरा ऐसा करता है तो महाप्रभु कहते हैं कोई बात नहीं। उनको लेके आते हैं घर में, सची माता के पास में। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु सची माता को देखते हैं, हमारे ब्रह्मचारी कभी कभी ये लीला करते हैं, सची माता के पैर पकड़ लेते हैं। अब सची माता भले ही बुजुर्ग हैं, चैतन्य महाप्रभु की माँ हैं, लेकिन एक सन्यासी आके पैर पकड़ रहा है तो कैसा लगेगा। तो सची माता भागने की कोशिश करती थी, जैसे भागने की कोशिश करती थी चाहता वो नित्यानंद प्रभु उनके पैर पकड़ लिया करते थे, तो उनके साथ भी खेलते थे। तो फिर सची माता उनको बैठाती हैं, कहती हैं प्रसाद लीजिए। दोनों को प्रसाद परोसती हैं। और जैसे ही वो प्रसाद परोसती हैं तो वो संदेश देती हैं जब, तो नित्यानंद प्रभु उसको लेके फेंकना चालू कर देते हैं। उनको समझ में आते ये कौन सी लीला है। बोले आपको खाने के लिए दिया, फेंकने के लिए नहीं दिया। तो फिर वो सची माता कहते क्यों फेंक रहे हो। बोले कहाँ फेंक रहे हैं। और जो सची माता की सर्विंग प्लेट थी, जब वो उसमें देखती हैं तो संदेश वहीं के वहीं थे। तो उनको समझ में आता कि ये असाधारण। फिर एक बार वो जब श्रीवास ठाकुर के घर में थे, तो मालिनी देवी, तो एक कौवा आता है और वो आसमान पात्र लेके चला जाता है मालिनी देवी का। और मालिनी देवी वहां पर विलाप करने लगती हैं कि श्रीवास ठाकुर स्नान करने गए हैं, लौट के आएंगे, बोलेंगे आसमान पात्र कहाँ है, आसमान पात्र तो है ही नहीं, कौवा लेके चला गया। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं क्या हुआ माता, आप क्यों रो रही हैं। बोले वो कौवा आसमान पात्र लेके गया। तो तुरंत नित्यानंद प्रभु कहते हैं कौवे आसमान पात्र लेके आओ। तुरंत कौवा आता है, आसमान पात्र रखता है, सराफत से चला जाता है। तो फिर मालिनी देवी कहती हैं ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जब आप सांदीपनी मुनि के पुत्रों को यमलोक से वापस लेके आ सकते हैं, तो एक कौवे से आसमान पात्र वापस लाना कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि बलराम जी के रूप में सांदीपनी मुनि के पुत्र को लेके आते हैं। बोले आश्चर्य वाली बात नहीं है। उस तरह से नित्यानंद प्रभु नवद्वीप के अंदर भी बहुत सारी लीलाएं करते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के सन्यास लेने का समय आता है, तब वो नित्यानंद प्रभु को बताते हैं कि मैं सन्यास लूंगा। नित्यानंद प्रभु विलाप करने लगते हैं और वो नित्यानंद प्रभु को कहते हैं किसी को बताना मत कि मैं सन्यास लेने वाला हूँ। तो वो कहते हैं कि आपकी जवान पत्नी है सची माता, सची माता का पहले ही बड़ा बेटा सन्यास ले चुका है, पति भगवत धाम जा चुके हैं, आप चले जाएंगे तो देखभाल कौन करेगा। यहाँ के जो भक्त लोग हैं आपके बिना कैसे रहेंगे। तो नित्यानंद प्रभु रात भर वहां विलाप करते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास ले लेते हैं, तो नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ में जाते हैं। और यहाँ अद्वैत आचार्य बहुत दुखी हो जाते हैं। अद्वैत आचार्य कहते हैं कि महाप्रभु छोड़ के चले गए हैं, हम भी नहीं रहेंगे, हम लोग भी आत्महत्या कर लेंगे। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य सारे भक्तों को लेके आत्महत्या करने चले जाते हैं। उसी समय वहां आकाशवाणी होती है कि चिंता मत करिए, महाप्रभु बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। तो जैसे कृष्ण है, कृष्ण ने चतुराई के साथ क्या बोला था, मैं वापस आऊंगा। इसलिए सारे ब्रजवासी उस आशा के साथ में रुके हुए थे। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि अगर घर में आग लग गई है तो घर के लोग क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से भक्तों के जीवन में जब विरह की अग्नि जलती है, तो आत्मा शरीर छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा कभी कभी क्या हो जाता है, अगर लॉक हो गया है तो आदमी निकल नहीं पाता है बाहर। तो वो लॉक क्या था, कृष्ण का वादा था कि मैं वापस आऊंगा, आई विल कम बैक।
तो उसी तरह से यहाँ पे महाप्रभु भी क्या बोलते हैं, आकाशवाणी क्या होती है, महाप्रभु वापस आएंगे। तो सारे भक्त लोग बोलते हैं ठीक है, तब तो हमको वहां रहना पड़ेगा। और यहाँ नित्यानंद प्रभु सारा अरेंजमेंट करते हैं। महाप्रभु का संन्यास होता है, संन्यास होने के बाद महाप्रभु तो भाग जाने लगते हैं, बोलते हैं वृंदावन 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 जाना है। केशव भारती महाराज भी, उनके जो गुरु जी थे, वो भी कहते हम भी वृंदावन चलेंगे। फिर उसके बाद में केशव भारती को वापस बोलते हैं आप यहीं पे रहिए, और नित्यानंद प्रभु के साथ में चैतन्य महाप्रभु वो जाने लगते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में इतने मग्न थे, हाँ, अहम तरस्सामि दुरंत पारम, तो इस तरह से बोले थे कि अहम तरस्सामि, मैं अपने आप को पार कर लूंगा। तो इस तरह से वो बोलते बोलते आगे जा रहे थे, और आगे कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो नित्यानंदपुर है, उनके साथ खेलते हैं, उनको थोड़ा मनाते हैं, और फिर कहते हैं कि अभी यहाँ पर एक सन्यासी आएगा, वो पूछेगा कि वृंदावन का रास्ता कौन सा है। तो कोई वक्रेश्वर करके, अभी भी हमको पता नहीं वो कौन सी जगह है, वहां पे भी महाप्रभु जाते हैं, उनके दर्शन लेते हैं। उसका तो उस मार्ग से जा रहे थे, तो बोलते कि आपको वो पूछेंगे कि वृंदावन का मार्ग, लेकिन आपको बताना कौन सा रास्ता है, शांतिपुर का रास्ता बताना है। तो वैसा ही होता है, वो सारे के सारे जो बच्चे थे वो शांतिपुर का रास्ता दिखा देते हैं, और महाप्रभु तो पूरे आनंद में थे, वृंदावन वृंदावन करते हुए जाते हैं। और जब शांतिपुर में वो गंगा दिखाई देती है, तो उनको लगता है कि ये यमुना है, पूरा यमुना 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 बोल के स्नान करने लगते हैं। और यमुना करके जब स्नान कर रहे थे, स्नान करके निकल ही रहे थे, तो देखते हैं अद्वैताचार्य उस साइड से आ रहे हैं नाव में। तो महाप्रभु उनको देख के बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं अद्वैत आप वृंदावन में। अद्वैताचार्य कहते हैं जहां जहां आपके पैर है वही वृंदावन है। तो मतलब क्या है, जहां जहां पैर है वहां वृंदावन है। बोले हाँ, वैसे शांतिपुर है, लेकिन ये आपका पैर यहाँ पड़ा तो ये वृंदावन बन गया। तो फिर यहाँ पर महाप्रभु बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं नित्यानंद प्रभु ने मुझे मूर्ख बनाया, बोले वहां जाना है, वृंदावन जाना है, और कहाँ भेज दिया, शांतिपुर भेज दिया। तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर अद्वैत ऐसा कहते हैं नहीं नहीं, देखिए नित्यानंद प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जहां जहां आप हैं वहां वृंदावन है। और जैसा कि नित्यानंद प्रभु ने बोला ये यमुना है, तो संगम में जो ये वाला जो रास्ता है, ये वाला जो साइड है, इस तरफ से यमुना आती है, उस साइड से गंगा आती है, तो ये छोर भी किसका है, यमुना का ही छोर है। तो उन्होंने झूठ नहीं बोला। फिर इस तरह से सारे के सारे भक्त वहां पर आते हैं, सची माता उनके लिए भोजन पकाती है चैतन्य महाप्रभु के लिए। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु उस साइड जाने लगते हैं, आ, पुरी की ओर, तो नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ में जाते हैं। तो उस समय, या फिर शायद गृहस्थ जीवन में भी एक और लीला होती है, वो होती है ललितपुर की। तो एक जगह थी, रास्ता था, गांव था जिसका नाम था ललितपुर। तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब उस गांव से जाते हैं, तो वहां पर एक सन्यासी था। तो सन्यासी जब देखता है कि अरे इतने दो सुंदर बालक आए हैं, तो दोनों को वहां पर बुलाता है, और फिर उसके बाद में महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को कहता है कि आप लोग कुछ लेंगे क्या। तो वो लोग बोलने के हाँ। तो फिर उसके बाद में वो कुछ फल वगैरह लेके आता है, फल वगैरह खिलाता है। फिर महाप्रभु जब जब उससे कृष्ण कथा कर रहे थे, तो वो कृष्ण कथा की बात नहीं कर रहा था, वो कर्म कांड की और यहाँ वहां की बातें कर रहा था। तो महाप्रभु पूछने लगते हैं कैसा सन्यासी है, कृष्ण कथा नहीं कर रहा है। तो नित्यानंद वो बोले थोड़ा स्पेशल सन्यासी है। फिर उसके बाद में वो सन्यासी कहने लगता है कि आपको कुछ मधुर चाहिए क्या, कुछ मधुर लेके आते हैं। तो वो कहते हैं कि ये मधुर क्या है। तो मधुर, नित्यानंद को बोलते हैं कि थोड़ा वेट करिए,
और फिर वो सन्यासी उनको आशीर्वाद देता है महाप्रभु को कि संसार में सारे भोग करो, तुम मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करो, बहुत सारा धन प्राप्त हो, अच्छी स्त्री प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, वो प्राप्त हो। तो महाप्रभु कहने लगते हैं, कहते हैं सन्यासी को ऐसा आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। सन्यासी को क्या आशीर्वाद देना चाहिए? कृष्णा मते रस्तु, अब कृष्ण भावना भावित रहे। सन्यासी बोलते हैं कलयुग आ गया है। हमने शास्त्रों में पढ़ा था कि कलयुग आने वाला है, लेकिन अब दिख रहा है कि साक्षात कलयुग आ गया है। आप किसी को अच्छा आशीर्वाद दीजिए, लोग कटु वचन बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं। नित्यानंद को कहते हैं कि उसको माफ कर दीजिए, वो नया नया बच्चा है, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हूँ, मुझे पता है कि आप बहुत एडवांस्ड हैं, उसको पता नहीं, छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। फिर थोड़े में देखते हैं कि वो मधुर चीज आ जाती है। वो क्या था? मदिरा, शराब आ जाती है। और वो कौन लेके आता है? वो उसकी पत्नी लेके आती है। तो पहले तो महाप्रभु पूछते ये कौन है? बोले सन्यासी की पत्नी है। बोले सन्यासी की पत्नी? बोले हाँ ये लीला है। बोले इसके हाथ में क्या है? बोले जो मधुर चीज बोल रहा था वही है। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को वो देखते हैं, तुरंत दौड़ के जाते हैं, कान बंद करते हैं और गंगा में डुबकी लगा देते हैं। बोले किसी तरह से पवित्र होना है। तो जाने अनजाने में ये भी नित्यानंद प्रभु की ही कृपा है। वो सन्यासी जिसको पूरी दुनिया भ्रष्ट बोलेगी, वाकई में भ्रष्ट था, बोलेगी नहीं, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्योंकि पतित पावन है, तो ऐसे पतित लोग जो पाखंडी क्यों ना हो, कितने भी गिरे क्यों ना हो, नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? उनका भी उद्धार करते हैं। तो महाप्रभु कई बार पाखंड पसंद नहीं करते। छोटा हरिदास ने थोड़ी सी गलती की, उनको रिजेक्ट कर दिया। काल कृष्णदास, उसने गलती की, उसको भी महाप्रभु ने बोला कि हमको मुंह नहीं देखना है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसे पाखंडियों का भी उद्धार करते हैं। तो व्यक्ति कितना भी निकृष्ट क्यों ना हो, पाखंडी क्यों ना हो, नित्यानंद प्रभु सबको उद्धार करते हैं। काल कृष्णदास को भी महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं? उनको सेवा करने के लिए बोलते हैं कि आप बंगाल में जाइए, महाप्रभु ने साउथ इंडियन यात्रा में जो जो लीला की है आपको सारे भक्तों को बताना है। तो वो जो सौभाग्य था वो काल कृष्णदास को प्राप्त होता है, जबकि वो भट्टाहारियों को देख के उनसे प्रभावित हो गए थे, महिलाओं से। फिर नित्यानंद प्रभु वहां उनको महाप्रभु के साथ में पुरी जाते हैं। पुरी में बहुत सारी लीलाएं होती हैं। और अचानक से एक दिन आ, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि निताय, हम लोग यहाँ सबका उद्धार तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं सन्यासी हूं, सन्यासी होने की वजह से मैं बहुत ऐसी जगह नहीं जा सकता हूं जहां पर एक गृहस्थ जा सकता है। जैसे खासकर उस समय सन्यासी स्टैंडर्ड और भी स्ट्रिक्ट थे। तो महाप्रभु प्रताप रुद्र को भी आमने सामने मिलते नहीं है। आज अगर हमारे किसी भी सन्यासी को बोल दीजिए कि पीएम मोदी आपसे मिलना चाहते हैं तो हमारे भक्त लोग तो दौड़ के जाएंगे। लेकिन उस समय सन्यास के स्टैंडर्ड इतने हाई थे कि कोई भी व्यक्ति कितना भी समृद्धशाली क्यों ना हो, पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, क्योंकि उसके पास धन है, इन्फ्लुएंस है, सन्यासी लोग उनसे मिलते नहीं थे। और फिर ऐसी जगह जाने कहाँ है, जाने की बात ही नहीं है जहाँ पर लोग मदिरा पान करते हैं या फिर वैश्यालय वगैरह है। तो सन्यासी के पास रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन महाप्रभु कहते हैं गृहस्थ का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए आप क्या करिए, आप विवाह कर लीजिए। अभी नित्यानंद प्रभु होते तो नित्यानंद प्रभु कुछ भी बहस कर सकते थे, बोल सकते थे अरे महाप्रभु ऐसे ही करना था तो आपको पहले से सन्यास नहीं लेना था। मैं तो सन्यासी था ना, मैं क्लास प्रीचिंग करता, स्कॉलरली प्रीचिंग करता, सर्वम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, इन सबको मैं प्रचार करता।
और आप गृहस्थ हैं, आप जा जाके गली गली में जाके सब जगह प्रचार करते हैं। तो आप गृहस्थ थे, सबने इतना मना किया, सन्यास ले लिया, और मैं बचपन से सन्यासी, अब मेरे को बोल रहे शादी कर लो। तो ये कौन सी लीला है? तो कोई भी होता मना करता। और खासकर अगर कोई सन्यासी है, खासकर उन दिनों में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना मतलब बहुत बदनामी होने वाली है। लोगों को मालूम है कि बहुत लोग बदनामी करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, अपराध करेंगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु कुछ भी नहीं दिखते, क्योंकि महाप्रभु ने बोला हुआ था कि विवाह करना है, वो तुरंत तैयार हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल है रिनाउंस ऑर्डर का इस्कॉन में, वो है प्रचार के लिए, वरना कलयुग में सन्यास कैसा है, वर्जित है। अश्वमेधम गवालंब्यम सन्यासम पहले पैतृकम देवेरोण सतुत्पत्ति कलो पंच वर्जित। जो सन्यास है वो वर्जित है। लेकिन जो भी लोग रिनाउंस ऑर्डर लेते हैं इस्कॉन के अंदर, वो किसके लिए लेते हैं? प्रचार करने के लिए, क्योंकि लोग जनरली रिनाउंस ऑर्डर का सम्मान करते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु को लगता है कि अभी प्रचार की आवश्यकता है, तो वो आश्रम बदल के और फिर चले जाते हैं नवद्वीप। और नवद्वीप की लीला सबको पता ही है कि जब वो नवद्वीप की ओर जाते हैं, तो पुरी से नवद्वीप आने में पहले 1 महीना लगता था, लेकिन नित्यानंद प्रभु को 3 महीने लगते हैं, क्योंकि वो सारे भक्तों के साथ में कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए जब जा रहे थे, तो पूरे मदहोश से पता नहीं था कि कौन से रास्ते में जा रहे हैं, किस गली में घुस रहे हैं, किस मोहल्ले में घुस रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता था। तो घुसते घुसते किसी और गली में घुस जाते थे, और लोग पूछते थे, लोगों से फिर पूछते थे, अरे हम लोग कहाँ पे आ गए, हमको तो नवद्वीप जाना है। बोले कि ज्यादा नहीं, आप रास्ते से सिर्फ 2 किलोमीटर भटके, तो आपको 2 किलोमीटर कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो 2 किलोमीटर पीछे जो जाते थे, पर रास्ते में रुकते नहीं थे, फिर 4 किलोमीटर और अंदर चले जाते थे। उनके बहुत सारे भक्त थे, वो भी एक से एक स्पेशल। कुछ भक्त थे चलते चलते, नाचते नाचते रुक जाते थे, और कृष्ण को याद करते हुए 8-8 घंटे उसी मुद्रा में बैठ खड़े रहते थे, ऐसे मुद्रा में कृष्ण को याद करते करते भूल ही जाते थे। अब 8 घंटे तक पूरी पार्टी रुकी हुई है, मानिए हम बस से कहीं यात्रा में जा रहे हैं, 8 घंटे के लिए कोई भक्त बस के सामने आके ऐसे खड़ा हो जाए, मन करेगा इसको साइड में करते हैं। क्या लीला कर रहा है। और जैसा हमने बताया, वहां पे महा नित्यानंद प्रभु प्रदर्शन करते हैं, जिसकी ओर देखते हैं दृष्टिपात से ही लोगों को कृष्ण प्रेम दे देते हैं। तो महाप्रभु ने जो बोला था प्रचार करना है, वो ऐसा प्रचार करते हैं जो पूरे भूतकाल में, भविष्यकाल में कभी किसी ने देखा ही नहीं था। खैर भक्त लोग जब सुनते तो चिंता हो जाती है, बोलते यार उसी समय पैदा होना चाहिए था, अभी इतनी साधना करनी पड़ती है। तो सिर्फ कृपा कृपा देते हैं वो। और 3 साल, सॉरी 3 साल नहीं बोले, 3 महीने, 3 महीने में कहाँ आते हैं? नवद्वीप आते हैं। और पहले आते हैं हमारे कलकत्ता के पास, कहाँ पे? पानीहाटी। तो जब वो पानीहाटी धाम में आते हैं, तो राघव पंडित के घर में जाते हैं, और पानीहाटी में ऐसा कीर्तन करते हैं कि वहां जिसको देखते हैं कृष्ण प्रेम दे देते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे वहां को खेलते हैं, तो नित्यानंद उनको दृष्टिपात करते हैं, तो सारे के सारे बच्चे नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नाचते गाते गाते इतने संलग्न हो जाते हैं कि शाम का समय हो जाता है, वापस नहीं आते हैं। तो मदर फादर जाते हैं, बोलते हैं खेलने के बीच बच्चों को टाइम हो गया, वापस आ जाओ। और जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं, बच्चे लोग सिंगी की तरह दहाड़ने लगते हैं, आ। माँ बाप बोलते हैं क्या हो गया इनको, भूत घुस गया है क्या, या गला खराब हो गया क्या? फिर वो कहते हैं वापस आओ। देख के समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ हो गया है।
और बच्चे नाचते नाचते, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े पेड़ उखाड़ लेते हैं, पेड़ के साथ नाचने लगते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अभी हरि नाम चल रहा है, कोई सैंडल उखाड़ लेते, सैंडल के साथ नाचने लगते हैं। तो सब लोग वहां नाचने लगते हैं। कुछ लोग पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, पेड़ के ऊपर नाचते हैं, पेड़ से टहनी के ऊपर नाचते हैं, टहनी से पत्ते के ऊपर नाचते हैं, गिरते नहीं है नीचे। तो ऐसा अद्भुत नृत्य चल रहा था कि सब लोग देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले क्या चल रहा है। और फिर वहां पर नित्यानंद को राघव पंडित के घर में, वहां पे बाद में रघुनाथ दादा उसको स्वामी को भी वो देते हैं, कृपा देते हैं, कृपा बांटते हैं। और उसके बाद वो भी एक लीला है। फिर वो इस स्थान पे आते हैं खरदा। खरदा के पहले वो जाते हैं अंबिका कालना। तो सूर्यकांत साराकेला, राइट, सूर्यकांत साराकेला, तो उनके घर में जाते हैं, जो कि वो भी महाप्रभु के महान भक्त थे। और उनसे कहते हैं कि हमको कुछ दक्षिणा चाहिए। तो बोले क्या दक्षिणा चाहिए? बोले कि हमको आपको पुत्री चाहिए विवाह में। तो जानवा देवी, तो उस तरह से जानवा देवी से वो विवाह करते हैं। और उस समय प्रसादम सर्विंग चल रही थी। प्रसादम सर्विंग जो है वो छोटी बहन कर रही थी, वसुधा। तो वसुधा जब प्रसादम सर्विंग कर रही थी, उसी समय क्या होता है, उनके सर में से जो पल्लू था वो उठ जाता है, हवा आती है, वो उठने लगता है। जैसे ही वो उड़ने लगता है, तो अब हाथ से प्रसादम सर्विंग कर रहे हैं, तो पल्लू को कैसे रोकेंगे? तो उनके अचानक दो हाथ और आ जाते हैं और वो पल्लू को रोक लेते हैं। चार हाथ आ जाते हैं और नित्यानंद प्रभु तुरंत का हाथ पकड़ लेते हैं। बोले ये तो साधारण जीव नहीं है। तो वो कहते हैं कि जानवर से हम विवाह करेंगे और ये हमको दहेज के रूप में चाहिए। तो इस तरह से जानवर और वसुधा दोनों से विवाह करते हैं नित्यानंद प्रभु। लेकिन विवाह करने के बाद में अब गृहस्थ हो गए हैं, तो घर चाहिए ना, कोई जमीन चाहिए। इसलिए वो एक स्थान पर आते हैं जहां पर एक जमींदार था, और जमींदार एक नंबर का कंजूस था, खासकर वैष्णवों से बहुत घृणा करता था। तो नित्यानंद वो कहते हैं आपके पास इतनी बड़ी जमीन है, थोड़ी सी जमीन हमको भी दे दीजिए। तो क्या करता है, अच्छा कुछ डोनेशन चाहिए, डोनेशन दे देते हैं। तो बोलते हैं कि ये खर ले लो, मतलब वो दाह, दाह मतलब एस, जो राख है, राख उनको दे देते हैं। वो देखते नहीं बल्कि उसको फेंक देता है। बोलते हैं यहाँ पे जहां जहां राख पड़ेगी ना, वो जमीन तुम्हारी है। और फेंकता कहाँ पर है? पानी में फेंकता है, गंगा में। कोई गंगा में कोई रह नहीं सकता है ना, तो वो गंगा में फेंकता है। लेकिन जैसे ही वो गंगा में फेंकता है, वहां पर जमीन आ जाती है। तो इस तरह से जो जमीन आती है उसका नाम है खरदा। तो खरदा में से ऐसे नित्यानंद को वहां पर जानवर और वसुधा के साथ निवास करते हैं, और वो प्रीचिंग प्रोग्राम करते थे। तो नित्यानंद का प्रीचिंग प्रोग्राम क्या है? नित्यानंद का प्रीचिंग प्रोग्राम है हरिनाम संकीर्तन। तो घर घर जाना है, हरिनाम संकीर्तन करना है, प्रसादन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फिर उसके बाद में जो घर के निवासी होंगे सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो एक एक शाम को एक एक फैमिली, फैमिली मतलब वो जो भी पाड़ा उनका जो था, सारे पाड़ा का एक साथ उद्धार। तो सब कैसे उद्धार। तो ये नित्यानंद का प्रोग्राम था। हम लोग वन टाइम प्रोग्राम करते हैं, फिर लोगों को लेके आते हैं, उसमें कुछ लोग आते हैं, फिर उनको सेशंस देते हैं, फिर जब करने के लिए बोलते हैं। पर नित्यानंद का वन टाइम प्रोग्राम परमानेंट प्रोग्राम। सब जगह वन टाइम प्रोग्राम ही कर रहे हैं, बस जाना है, कीर्तन करना है, प्रसाद वितरण करना है, बस आपको कृष्ण प्रेम, परफेक्शन उसी दिन। तो ये नित्यानंद का पिचिंग प्रोग्राम था। तो इस तरह से बंगाल में वो पूरा पिचिंग करते हैं, क्योंकि महाप्रभु ने पूरी में प्रचार किया, इतने सारे लोगों को भक्त बनाया, साउथ इंडिया में प्रचार किया, इतने लोगों को भक्त बनाया, पर उनको लगा यार बंगाल में प्रचार नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे जाते हैं तो लोग हमारा अपमान करते हैं,
बोले लेकिन बंगाल में उनको विशेष कृपा चाहिए और एक्स्ट्रा कृपा चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा कृपा किसके द्वारा मिलेगी? श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा। तो हम लोग बंगाल में हैं, तो हमारे काफी सन्यासी लोग जब एल्बर्ट रोड मंदिर में आते थे तो कुछ मिसिंग लगता था। मिसिंग क्या था? नित्यानंद प्रभु नहीं है। कलकत्ता में राधा गोविंद हैं, महाप्रभु हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, पर नित्यानंद प्रभु नहीं है। लेकिन अभी नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई है, न्यूटाउन में हमारे नित्यानंद प्रभु आए हैं, और ये हमारी पहली नित्यानंद त्रयोदशी है। इनॉग्रेशन नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा के बीच में हुआ था, राइट? आफ्टर गौर पूर्णिमा, हाँ आफ्टर गौर पूर्णिमा मई में हुआ था, May 20। तो पहली नित्यानंद त्रयोदशी है, और ये नित्यानंद प्रभु का ही स्थान है। बंगाल जो है वो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को दिया हुआ है। तो हम अगर नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो हमको कृपा प्रदान करें, हम लोग कितने निर्कृष्ट हैं, और प्रचार करने की क्षमता दें कि नित्यानंद प्रभु ही भक्ति करने का बल प्रदान करते हैं। कई बार हमको सबको फिलॉसफी पता है, पर उसको प्रैक्टिस करने की स्ट्रेंथ नहीं होती है, शक्ति नहीं होती है। तो वो शक्ति कौन प्रदान करते हैं? नित्यानंद प्रभु प्रदान करते हैं। तो आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए कि हमको, मेरे को भी नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त हो। श्री नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की, श्री गोपाल की, जय गौर प्रेमानंदे। Prabhuji, you like to speak? I'll translate in Hindi or His Grace, sorry Prabhu ki. They do. Hare Krishna. Om Ganachimandasya Ganandana Salakaya Taksun Militanyena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadandikam Vandeham Sri Guru Sri Kamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagatatam Sahagana Raghunatang Vitang Tang Jajivam Sadvaitam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Badan Sahagana Lalita Shiva Shakan Vitangscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakapa Trubhishta Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanan Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So who here speaks English? Let me see your hands. Very good. You must be IIT Wallace, huh? Most of you. Very good. Hare Krishna. So Krishna, he's never alone. Just like we don't like to be alone. It's not so much fun being alone, is it? Krishna wants to have fun. So he expands himself to have fun. So his very, very first expansion is Balaram.
And so Krishna and Balaram, and then he expands even further through his internal and Haladini Shakti. And this is Balaram, and Krishna and Balaram in Kali Yuga, they come as Gaur-Nitai. So this is inconceivable. Like, we cannot do this. Like, we are all alone and we're bored and we have nothing to do. So we don't have that potency to expand ourselves and into somebody else that is different than us and have a relationship with that person. But Krishna, he can do that. I was reading in the Chaitanya Charitamrita this morning that, there's things in the material world that are inconceivable. Just like there's a banyan tree. And from this banyan tree, so many little fruits, they're figs, they fall. And in these little fruits, there's hundreds of little seeds. And each of these seeds from the hundreds and millions of fruits from this tree has the potency to produce another tree. And then if another tree grows, then it produces all these little fruits, hundreds and thousands, and they each have the same potency. So this is inconceivable. From a little tiny little seed, like a fig seed is very small, but it can produce from this seed a gigantic tree. Also, an example can be given. I remember as a child, you look in the nighttime, you look out into the sky at the stars, and you think, where does it end? And then you think, wait a minute, it can't end, because if you look out into the sky, if there's a brick wall or something, then there's something beyond that brick wall. And you look out there, and then you just get bewildered. You cannot understand this situation here in the material world. It is inconceivable. So Krishna is inconceivable. And Jiva Goswami, he says that if you want to understand or have some conception of God, first of all, you have to accept that he is inconceivable. Then you can receive the mercy of the inconceivable, because you're perceiving him as he is. And then by the mercy of the inconceivable, you can perceive to some degree the inconceivable. Whereas the atheists, they just don't think about it. They just think, okay, I have this tongue, I have this nose, I have this belly, I have these genitals, and I have these arms and legs. What can I do to enjoy life? And this is a very, very shallow situation for the atheists. They have no depth to them. Whereas the devotees, they perceive the world in a different way. They understand that just like
I was driving through this Newtown, and Calcutta has changed a lot since I first came here in 1977. It's becoming modern, so to speak. And there's so many big high-rise buildings coming up. And but behind each building, there's an architect. There's a person. He conceived of the idea of this building, and then he's hired by some rich Marwari to the Marwari wants to make money. So then the Marwari, he hires the architect. Okay, you design a high-rise building for me. And first of all, he purchases the land, and then the plan is there, and then they get a contractor and they have the blueprint, and he explains what to do, the architect to the contractor, and then the contractor, he has the access to like the cement walla and the marble walla and the electricians and all these different mysteries that you have here, and within a few years you have a building, and it didn't just appear. And this is something material. But this Marwari, he didn't create the cement. He didn't create the, anything to do with this building. He simply manipulated matter in such a way, and hired other people to manipulate matter. And then we have this whole building that people live in, and you pull a tap and water comes out, and you press a button and lights go on, and so many things. And you go into the bathroom and you pass water and you flush the toilet, and the bad substance goes away. So the material world is so many things go on here, but behind everything there's personality. So similarly, this material world, the origin of this material world, before this material world was even here, there's a personality. Just like before this big building, this building here came up, or any building, there is a person that conceived of it, and the architect, and then he thought about it and put it on paper and drew it up, and so similarly, Krishna has his ways of getting things done, but he doesn't have to go to college. Krishna didn't go to IIT. He's always been here and always will be here, and he's always been very smart. He's the real gold medalist. All right, and he can do wonderful things without going to college. I remember my father. I was born probably 67 years ago. And when I was young, and I was, in high school, my father told me, "Listen, I want you. I'll send you to college, all right, and I'll pay for everything. Don't worry." But I was born during the hippie era, and we become products of our environment. Just like now, here in India, everyone around you is going to college and getting a degree, and especially IIT. Everyone wants to go to America, right? So you have to go to college in order to get a good job, and then from there maybe you can
go to the America. Who knows? There's a possibility there. So my father, he wanted me to go to college, but I wasn't in the same, I didn't grow up in the same environment that you all did. We were thinking, well, I don't want to become like my parents, get a job and work 9 to 5 and, live in a house on a road, and there's another house next to you and another house next to you, that house, and in a neighborhood, and just spend your life endeavoring to make money to make ends meet. So we went about things in a different way. We went into the jungle. I personally I was in Hawaii after I graduated from high school. I just went to Hawaii. And we were living in the jungle. And we built houses from the land. There's the coconut trees, and we learned how to weave the leaves, and we cut down trees and put them in the ground and made a roof and made a loft, and it's warm, so we didn't have to, anyway, we got by. And we gardened, and we grew vegetables, and we went onto other people's land in the night time and picked the fruit when they were sleeping. This is hippie life. And we go to the government and say, I'm poor, and then they give us these coupons so that we can go to the store and get food. We could also do that. And we got by. But that wasn't satisfying either. Just like working 9 to 5 and, getting money and getting a bank account and having and then getting enough capital together so that you can buy a house, and then you feel yourself capable. Oh, okay, I need a wife now. And then you have a wife, and then you have children. This is a whole entanglement. And the hippies got involved in the same entanglement. They also had attraction for the opposite sex, maybe even more so. And then they find that, they have a girlfriend, and then the girlfriend gets pregnant. I have to, provide. So it wasn't a very sustainable philosophy. All right. So, but one thing good about this hippies is that they had some inclination toward spiritual life. And when that happens, Brahmanda Brahmate Kone Bhagavanji, Guru Krishna Prasadipai Bhakti Lata Beach, that you going through this universal creation of Lord Brahma through in so many different situations, and while you're going through these so many different situations, through so many lifetimes and so many different bodies on so many different planets, if you have some inclination to understand what's this all about, what's my purpose here, where did this place come from, who created it? If you do that, if you have that, that internal kind of inquiry, atato brahma jigasa, then Krishna, he reciprocates. And he reciprocated with me. And all of a sudden I was living in this, we didn't even know whose land it was.
And I had some disagreement with some other person living there, and then this other person somehow or other got control of the land and said, I'm sorry, but you have to go. So I said, okay, I'll go. And I went to some friends. I says, I'm going to go now, but I don't know where I'm going, but I'll go somewhere. And they said, I don't know where you can go, but this place, you just have to follow some rules. No illicit sex, no meat eating, no gambling, no intoxication. They didn't even explain what this place is. All right. So I said, okay, I'll go there for a little while. And then from there, I'll figure out where I'm going to go next. And these were devotees that had left. And they were living just like us. And I want to explain to you how we were living, because it's not really appropriate in front of the Gaur Thai, because we were living like monkeys, actually. And doing so many things that I would not even conceive of doing anymore. But anyway, so I had got some directions, and I gathered my belongings together in my little pack, and I went up to the road, and I stuck my thumb out. In India, you just kind of go like this. That means stop and pick me up, you know. In America, you go like this. And in those days, we could go anywhere we wanted to go. Just get out on the road and do this. Hawaii is a small place. But before I was in Hawaii, we were in America. And we went far places by doing this. And then people would pick you up. And then you'd tell them where you want to go. And then say, well, I'm not going that far, but I'll make it so that we'll get you closer. You know? And so then you get out, and then you, again, and eventually get where you wanted to go. So I was on the road, and in Hawaii, this is what's called the Big Island of Hawaii, where there's a volcano there. Sometimes it explodes, sometimes it doesn't. It's either you go around the road and it's a circle, it's a few hundred miles, and if you go in one direction, to the left is the ocean, to the right is the mountain. So it's either ocean side or mountain side. It's very simple. So they told me where to get off, these devotees that weren't acting as devotees anymore. And they said where to go. And it was on the mountain side of the road. And so I got dropped off, and I got out, and I knew I had to walk about a mile up this road. And this is my beginning in Krishna consciousness. There was a farm, there were devotees, where in those days you come, and for a couple of days maybe you wear your regular clothes, and you get up in the morning and you go to Mangalartik, and interesting. And you learn the Maha Mantra. I knew nothing. And then all of a sudden they give you a Bhagavad Gita. Here you can read this. And then there's Tulsi Puja. They're doing to a plant. And they go, okay. And everyone else is doing it, so you do it too. This is the potency of association. If you associate with people that are following Krishna consciousness, you'll
do it also. You'll feel like doing it. You see other people having fun, okay, I'll have fun too. And maybe after 3 or 4 weeks, I was explained who Lord Chaitanya was. And actually, after 2 weeks, Srila Prabhupada came. Now I'll tell you a little story about when Srila Prabhupada came. This place was on the mountain in Hawaii, and the devotees that had started this place had no money. Just like where I was in the hippie commune, they had no money. So it was right above the sugarcane fields. And the people, they used to have from the Philippines, people come from the Philippines to work in the sugar canes, and they built these shacks for them to live in. So these shacks were abandoned, so the devotees went there and took the boards from these shacks here and there and made a temple. And it was, you know, we didn't have an architect. They didn't have an architect, believe me. It was, you know, quite primitive. And the temple room, the ceiling wasn't beautiful like this. It was like rafters, and then they had cloth. And then you could see the rats on the other side of the cloth, like this. And we didn't have running water. We got water from the rain. It would fall on the roof and then go into a tank. Like this. We didn't have, we had to go outside to use the bathroom. And in the morning time when we got up, we got up and we ran up to a pond and jumped in. And anyway, like this. Anyway, Srila Prabhupada came there. And I'd been there for 2 weeks. And all of a sudden my hair is gone. And I have a little bit of hair left here. And I'm wearing orange. We didn't wear white. You know, we immediately just, and I had been chanting, after a couple of days, I actually started chanting 16 rounds. You know. And Srila Prabhupada came, and I was like this, and everyone else was like that, and we all paid our dandavats. And Srila Prabhupada just looked around, very calmly, you know, went up into the temple, and we all followed him. And we had an artik. And we had Gaur-Nitai deities, you know, about that tall, you know, bell metal. And I liked the chanting and I liked the dancing. I was 19 years old. All right. And they offer the incense. Then they offered the ghee lamp. And I went and got the ghee lamp. And I had done it before properly, but when Srila Prabhupada was there, for some reason, I thought, I will say, just like when you take a meal, when do you eat the rasgulla? At the end, right? So I was thinking, I will save the best for last. So I went around with a ghee lamp to all the devotees first, and then to Prabhupada last. And Srila Prabhupada went. He didn't, oh, what are you doing? I'm the guru here. You're going to everyone first and me last. He took it like that. And no one said anything to me. None of the devotees. So then, what's next? The water. I did the same thing with the water. I went and gave all the devotees first, and I got Prabhupada last. Prabhupada did. Then the flowers is the next thing you pass around. Same thing.
Prabhupada bent down. He smelled it. Now, many years later, fast forward 30 years or something, I'm in Mayapur. I'm a Prabhupada disciple. And at the time of, Darshanartik, before Guru Puja in Mayapur, the helmet of Lord Nrsimhadev is given to all the devotees. And if you're a Prabhupada disciple, they let you go first. So I get in line with some other of my godbrothers, and we let the sannyasis go first. And, but then some other person, some nephew of mine, I don't remember, he cuts in front of me. And I go, what's going on here? And I'm feeling like offended. But then I remember what I did to Srila Prabhupada. And I remembered his reaction. He didn't have a reaction. He remained humble. His feathers were not. So I'm thinking, okay, go ahead. And then let him go first, and I go like that. So we can learn by the examples of the acharyas. What is the proper behavior? There's humility, but humility, it cannot be faked. It is a condition of the heart. So sometimes we may have to kind of like force ourselves to be humble. It's like this situation. I had to force myself to be humble. But the advanced souls, they don't require any force. They are seeing Krishna as very great, and they are very small. An example is given in the pastimes of Lord Nityananda. When he was preaching with Haridas Thakur, they were a team. It's just like you devotees, you sometimes you go out in teams, right? Go out preaching. The two of you go out. And similarly, in Lord Chaitanya's time, Lord Nityananda and Haridas Thakur, they went out as a team. And there were these two drunken brothers, Jagai and Madai, and they were very ambitious. They wanted to turn them into devotees. So they, met them, and they were notorious, gundas. And they laughed at them and ran after them to beat them up, and they ran away and got away, and they were so drunk that they stopped. Anyway, we all know about Jagai and Madai. But they tried again. Lord Nityananda is very, very bold. He's very brave. And he again approached them. Please take the holy name, and it will purify your existence. You will be very happy. And they laughed at him, and then one of them, I don't remember which one, but one of them got angry and threw this broken piece of clay pot, and it cut Lord Nityananda in the head. And Lord Nityananda, but Lord Chaitanya, he heard of this, and he came like fire, because his brother, it's like the pastime of Bhrigu Muni. He wants to test who is the supreme, Brahma, Shiva, or Vishnu. And so when he gave the test to Lord Brahma, that he
ignored him, and then Lord Brahma, he got angry because he's being neglected. And he, to Lord Shiva, the next higher step of committing offense is speak cruel words. And you want to see if they're going to get angry or not, because that's the test of who is God. If he gets angry, he's not God. So, he told Lord Shiva, you have ashes from a crematorium, you're dirty, this, that. Lord Shiva gets very angry. Okay, he's not God. Went to Lord Vishnu and kicked him in the chest. And Lord Vishnu says, "Oh, did I hurt your foot?" So this is the topmost test of humility, is if you physically harm someone and they're like that. They're humble and they're not offensive. What did I do? Please forgive me. Whatever has happened to me, I deserve. And please forgive me for offending you. I deserve what you have given me. I don't know what I did, but I must have done something. So, Lord Nityananda, he was, Lord Chaitanya is like bringing out his Sudarshan chakra, and Jagai and Madai are like completely, afraid, and they're, bowing down on the ground, and this, Sudarshan chakras, and Lord Nityananda, he goes, you have come to this world to deliver the most fallen. And we don't kill the body now. We kill the mentality. This is Kali Yuga. You kill them, you're going to have to kill everybody else, practically speaking. So please don't, like that. And then when Jagai and Madai saw how Lord Nityananda, after they had physically assaulted him, was protecting them, then they had a change of heart. Because here they were on the verge of death. They had never experienced this before, where actually someone's more powerful than them. They had some tejas, this Jagan Madai. They got away with, how there's a saying, get away with murder? They did get away with murder. They got away with rape. They got away with murder. They got away with theft. They got away with everything. No one dared to transgress them. They had some potency, some demoniac potency, and no one could stop them. But when they came against Lord Chaitanya, and because they had offended Lord Nityananda to the topmost degree, and Lord Chaitanya was furiously angry, and for the first time in their life, they saw someone that they had more power than them, and he was, and they never seen such an exhibition of power. On the tip of his finger, a twirling razor blade wheel is spinning around fast, and he's just about ready to go, and they could see this, and they're just going. And then Lord Nityananda, he stops him and says something to him, and Lord Chaitanya comes back to his normal peaceful self. And then he told, with very stern words, that I will save you, but first, if you fall at the feet of Lord Nityananda and beg his forgiveness and become devotees.
And they did that. And there's one pastime of Srila Prabhupada. He was in India with at first of all, there wasn't any of you. You know how many disciples Srila Prabhupada made in India? I don't know, 20 or 30? I mean, there's 20 or 30 devotees made every day now. You know, from all these base in IIT, you know, it's like amazing what's happening in ISKCON now. It's just like, you know, we knew in earlier day, we knew everyone knew each other. Now it's like impossible. So anyway, Srila Prabhupada was in Calcutta actually, Albert Road. Albert Road looked a little different than it does now. And the devotees were complaining to Srila Prabhupada. You know, the Indians, they don't know how to use a trash can. You know, just throw it on the road. You know, cigarette, smoke your cigarette, and then the pack's empty, throw it on the road. Then they don't know how to drive properly. I mean, what's this using the horn all the time? You know, and they don't have lines on the road. Everyone's just, you know, and cutting in front of each other. And it says, this is craziness. And, you know, we go to the train station to get a train ticket, and they don't know how to wait in line. They're always, you know, going up to the window and showing the rupees and, you know, and Srila Prabhupada, and so many things. It was, you know, difficult for the Western devotees. And Srila Prabhupada said, yes, they are running away from Krishna. They are this far from Krishna, and they are running away. But you, it's pointing to the Western devotee, you're this far from Krishna, and you're running towards Krishna. So all you have to do is convince the Indians to turn around, and they are much closer to Krishna than you are. And then he goes, oh, sorry, Prabhupada. So whenever, you know, I at some, you know, cultured Indian's house or something, and they're like this to me and saying, oh, you're a Prabhupada disciple, and you're this and you're that. I go, listen, you don't know where I'm coming from. You don't know my background. You don't know, what I did when I was young. You don't know my samskaras. They're not the same samskaras you have. My samskaras are different. And then I'll tell them this pastime. And then say, can I touch your feet, please? Can I serve you? You're closer to Krishna than me. According to etiquette, yes, okay. But according to reality, there's a whole different situation. So this pastime also, along with the pastime I had personally with Srila Prabhupada, gives me some impetus to be tolerant in India. Because that person that's driving that Maruti or rickshaw or, Tata Sumo or Tata 407 that just cut in front of my driver, he's smoking a beedi and whatever he's doing, he's closer to Krishna than me. He just doesn't know it. So you're living in a land where Krishna Bhakti is kind of like inherent. It doesn't take that much to convince someone to
take up the practice of bhakti. And there's an impetus here because life isn't that great here, actually. Even if you're living in one of these new high-rise buildings and you have a job where you're on the computer all day long and whatever this IT work is, I have no idea. I have absolutely no conception of what you guys do. How you make all your money and how it's so valuable that that you can now all of a sudden there's a middle class in India and everyone has a car, but you're living in India and there's this new middle class and there's so many of you and you all have cars and now the air is all polluted and it's so crowded and it's worse off than it was before. It's not very, the water's polluted, the air's polluted, it's crowded, it's loud, it's this, it's that. And so you can always convince someone in India that actually the material world's not so great. And there's an alternative. It's okay, keep your job. But practice Krishna Bhakti also at the same time. When I was a new devotee, a job, we didn't, talk to people that had jobs. They were, they were beyond help. We went after the other hippies and say, and say, hey, we're following, ancient India. And, we have our beads and we chant mantras and we're vegetarian. Most of the hippies were vegetarians and says, and we just had to convince them that actually it's a little more healthy to be a little bit clean. All right. And don't worry, even though you cut your hair off, you can still get a wife. Because there's other girl hippies that are now devotees. And you can have a wife too. It's okay. And we'll give you a nice place to live. And we give them the food we eat. And they have no attachments. They have no, real focus on, what they want to do with life. It's all just day to day. And then all of a sudden, we've got, 10 bhaktas, and then, shaving this long hair off and, giving them a saffron dhoti and throwing away the dirty jeans they had. And lots of new devotees like this from this group of people that were, living very ragged and poor existence like that because they didn't want to follow their parents because they saw that it was a miserable existence. So anywhere in the material world, Brahma Bhuvana Loka Punar is you can actually convince someone that it's miserable and take up spiritual life, but especially on planet Earth, where the facility is okay, but it's also miserable. So it's the middle of the ground, so to speak. It's the perfect place. Whereas if it's too bad and all your energy and all your strength is simply to find food and find shelter and, no time, it's just miserable. But then there's no light at the end of the tunnel. Religiosity is very scarce. You can go through your whole life and you
wouldn't even hear about spirituality from beginning to end. But in the middle planets, we have a very, beneficial situation. I mean, personally, I was a brahmachari for 6 years, and then I got married. And when I got married, it was a big embarrassment because it's like to put on white, and then everyone looks at you and says, well, we know what's on your mind. So anyway, I've gone through what's in English called the School of Hard Knocks. And if you keep your chanting up throughout your struggles with your senses, there is a light at the end of the tunnel. And it will come to a point where you look at the opposite sex and you see what's there, and you know what's there, and you know that it's not what it might be a good looking package, but underneath it's not very nice. It's a whole different, the illusion of attraction, it gets revealed. If you go through it properly and you chant the holy names and you worship the deities and you take prasadam and you take association with devotees and you worship the deity, especially the deity of Lord Nityananda. I remember as a young grihasta, and I was struggling somewhat with my senses, and it was Lord Nityananda's appearance day. I was in Hawaii, and we had jasmine bushes and trees. I went and picked as many jasmines as possible, and then I was doing the artik, and before doing the artik, I put the flowers that I had picked at the feet of Lord Nityananda and begged his mercy. So, and it's guaranteed that if you beg the mercy of Lord Nityananda, it will come. But it's not. Lord Nityananda, he has his own time. It may not come immediately. But if you are steady and you persevere and you go through this life submissively taking your spiritual master's order to your heart by chanting the holy names and associating with devotees, worshiping the deity, getting up early in the morning, and if you're married, you have your wife, you don't think of anyone else, and then eventually you look at your wife differently than you used to also. And then eventually you come to the point where actually, I don't think I really need to have the opposite sex. I think I'd be satisfied just hanging out with the guys. It's actually more fun and more satisfying, and we have something more in common, which is actually true. That you try, it's always awkward being with the opposite sex. For the women too. The women, they make friends with each other, and the men, they make friends with each other. And then when this sex desire gets in the way and you feel impelled to have a woman with you, there's no real, you're different. And it's not the same. And you kind of go through it, but it's not so comfortable actually. You think you're going to be happy, but it's really more of a difficult situation. So eventually you come to that point, and then you kind of do your duty, so to speak, and but you're more inclined to hang out with guys, and you get your own room now. You
you don't want to be, and then, anyway, it's, this is my realization. And I'm very fortunate that for me, being born in America, when people ask me where I'm from, you know what I tell them? Here in India, Papi Desh. Because we are trained. We are, from the very young age, that you get a girlfriend. And if you don't get a girlfriend, you're a loser. You must do that. Everyone else is doing that. And now it's gotten worse. If you can have a boyfriend, like a girlfriend, some of the, and it's okay. This gay liberation movement. When I was young, if you had some of the other men, they had inclinations towards men. Men had inclinations for men, and they hid it. They didn't show. But now, yes, it's good. And they encourage it. If you have this inclination, yes, you should get a boyfriend. And the girls, if they have an inclination towards another girl, they have attraction for a girl. Yes, it's fine. And it's in the movies. It's on the billboards. It's fine. It's great. Go for it. We're in Krishna consciousness. We understand that regardless of your inclination, your attraction, if it's for the same sex or for the opposite sex, it's all dirty business. And you can look at every single living entity, regardless of what their inclinations are, and be compassionate toward them, and be kind to them, and encourage them in spiritual life. And eventually, if you keep chanting the holy names and worship Lord Nityananda, you'll get over it. And you'll be able to see yourself and everyone else as a spirit soul. And this bodily attraction that is such a botheration will gradually dissipate and go away. Like that. So what time is the Artik? Bogart, is there an Artik at noon here? Acha. This is similar to how we have a Gaur Nitai temple in North Carolina. But we have, yeah. I'm sure you will. This is today. It's special. We have Gaur Nitai Didis, and we've had them for like about 5 years. But we do have a regular schedule of Mangal Artik, Darshan Artik, and then we have a noon Artik, and then we have a Sundar Artik. So we do have 4 Artiks. So anyway, you guys are just getting started and you're getting going here. So would anyone have any questions or comments? Generally speaking, it's a little difficult for me to speak on personalities. I have a couple minutes. I have another story. Is that okay? Okay. I was a book distributor, and being American, I wanted to be number 1. All right. And I became number 1. And I was in Hawaii, and they said that you could go on a vacation. So I went to New Vrindavan for Balaram's appearance day from Hawaii. And this was in 1976. And I went to the program, and at the time, Nityananda Swami was giving the lecture.
And then he pointed to some obscure brahmachari who was sitting on the floor in the corner. And he said, Radhanath, would you like to say something about Lord Balaram? And from this brahmachari's mouth came a constant flow of nectar about Lord Balaram. Just like a river, and then there's a waterfall, just a constant flow. And it's like water flowing over a cliff, a waterfall. It's not an endeavor. The water does not have, there's a force of gravity there that it just does it, it propels itself. So this Radhanath Brahmachari was speaking about Lord Balaram, and he didn't say, he'd have to think, he didn't have to struggle for words, but he was speaking so naturally and so was full of nectar about Lord Balaram. If you ask me to do that, I'm sorry. I don't have those sanskars. I don't know how, Radhanath Swami, he's born in America, but he didn't have those sanskars. So sometimes people are born in places and they're special. And I have to say that Radhanath Swami is one of these personalities. And anyway, Hare Krishna. Anyone have any questions or comments? Who's next? Do you want to get up here and speak about Lord Nityananda? Are you an IIT guy? Huh? Kharagpur? From where? Oh, very good. All right. Yes, Prabhu. You're welcome. Oh, what should be your prayer? Okay. Oh, Lord Nityananda, please be merciful to me for my past activities in the material world. I have this illusory attraction for the opposite sex, or it might be the same sex. It depends on who you are. Please be merciful to me and remove this covering of Maya so that I can have this and give me the attraction for you through your holy name and through the holy name of Krishna, and so that I can dance and in ecstasy while chanting your holy name. All right? How's that? Hare Krishna. Actually, Srila Prabhupada said that if you can get over this hurdle of the attraction to the opposite sex, you're halfway there. You're not all the way there. You're anartha nivritti. Okay. You still have some work to do, but it's a lot easier. And you will not be so distracted, and you will be able to focus on the holy name. Okay? Any other questions? Yes, Prabhu? This is little unusual question, bro. I heard from a devotee, he was asking me this question. So you're telling that it is unusual, the attraction between man and woman is unusual. It is not very, which goes well together. Yeah, it's not unusual. It's usual, but it's uncomfortable. Uncomfortable. Yeah. So he was asking me a question that we see that there's mention in Bhagavatam that if husband and wife practice devotional service together, they'll go to Vaikuntha together. So Yeah, he they was can- asking
does this relationship, conjugal relationship, exists even in a spiritual world? Yeah, but there's no sex in the spiritual world. You feel comfortable with the opposite sex, but this sex attraction is not there. So it's different. It's completely it's a different situation, a different mentality. You're trying to please Krishna. You're not trying to please your bodies. And believe me, as you get old, and if you've been chanting Hare Krishna and reading the Bhagavatam and associating with devotees and so on, you don't have to share your body with someone else. It's just, no, you don't have to do that. It's like you're having a hard time, sharing it with yourself. It's anything substance that comes out of these bodies, especially on the earth planet, is disgusting. Has a really terrible odor. But not only by practicing spiritual life will we be able to get over our attraction to the opposite sex on this planet, but if you're on the heavenly planets, you'll be able to do it also, where your breath is fragrant, and your stool smells like roses, and where you don't have this challenge. So Krishna consciousness is so potent and powerful that you will, because when you leave this world and you leave this body behind, it's described that you go through the heavenly planets, and if there's any attraction for something down there, you must stop and get down and go there. So we're lucky we're here because it's not so hard. It's more impetus. There's big impetus because it's not so great here. But we have to also really pray that when we leave this body, we don't think that there's some other place in the material world. Earth, forget Earth. Indraloka, that's a good place to go. We have to also be very sincere and come to this conclusion and come to this realization that we are not our bodies, and we are servants of Krishna to actually become happy. Because in the heavenly planets, okay, the bad smells are not there, but there's no Ananda like this. I mean, you get good foods to eat, you have nice places to live, everything looks beautiful, but still, it's not Krishna. It's still the material world. All right, so are we going to have some kind of program now? Who's in charge here? You're in charge. Okay. What's going on? Okay. Hare Krishna. While he's finding out, does anyone else have any questions? Any comments? Yes, Prabhu, go ahead. I'll continue on until I'm dragged off. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. So, as just today morning we heard, this question was mingling on my mind, that Jagai Madai, although they were so sinful and all the extreme activities they have done. Oh yeah. But they have one qualification, that they have not committed any offense to the devotees. They had never done that before. Never done that before. Yes. Okay. I didn't. Thank you for telling me that. All right. Okay. So I heard that, Prabhuji, that they have that one qualification, and therefore they have been selected. So what qualification do we have? Because Prabhupada said that we all are like Jagais Madais, and I can't say that I haven't offended anyone. I say you do have qualification. If you're born in India, you have qualification.
Bharatibu me manushaja, you know that sloka. But, so that, anyway, this pastime and this instruction that you gave us through this pastime shows us how important it is to be very courteous and kind and tolerant with the devotees. Because this is, we think that the attraction for the opposite sex is a big problem. Vaishnava aparad, that's a bigger problem. For it will completely, it creates material desire, Vaishnava aparad. That you think you have an attraction for the opposite sex now, you commit Vaishnava aparad and it will get out of control. Just like when Mohini Murti revealed herself to Lord Shiva, and he became shameless and running after the Mohini Murti in front, and there was all these sages and saints and, looking at him, and he didn't care. We can become the material world can be a very embarrassing, difficult situation if we commit Vaishnava aparad, and you will not want to be around the devotees anymore, because it's like you would see your desires and your inclinations are completely averse to what is proper. So, yes, if you have the qualification where you don't offend Vaishnava and never have and never will, your spiritual life is guaranteed. Just like Jagai and Madai, they offended Lord Nityananda, and then they paid their obeisances to Lord Nityananda, and they took up spiritual life, and their lives just completely turned around. I mean, Jagai and I don't remember which one, but one of them built the ghat. Is that Madai Ghat? Yeah, Madai. Yeah. And he would, serve the devotees as they were, and the pilgrims as they were coming to bathe. It's like his humility was like touched the heart. After previously he was such a horrible person, and he became completely different. So spiritual life will do that. If you go through the steps and stages, it does reform your character. Like that. Hare Krishna. Okay. Anyone else would like another question? Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. As you were discussing that Krishna, when he wants to enjoy, then he can expand himself. So he can expand himself by Swansa. And he is also Atmaram. So what is the role of Vibhinansa, Jivas, for giving him enjoyment? All right. I'm 67 years old, and I'm a little hard of hearing. Can someone else that has a more clear English accent repeat what he said, please? I'm sorry, I couldn't understand you. I have a Papidesh ear, and so I can't your accent. I'm sorry. Yes. He was asking, as you were speaking in the class, that Balram is Krishna's personal expansion for enjoyment. Similarly, why jivas are created? They are also expansion of Krishna. Why are we created? Yes. Yeah, what is the role? The jiva. It's also for Krishna's pleasure. The jiva. Because he wants to, just like, he wants to enjoy with many. And
Balaram, he heads the way. He's the first expansion, and everyone else after that is also. And we can enjoy with Krishna, and by trying to please Krishna and play with Krishna, fight with Krishna, herd cows with Krishna, dance with Krishna, take care of Krishna, whatever your rasa with Krishna is, that he wants to enjoy with you. But you have to enjoy with him. And then if you try to enjoy in relationship to the skin and bones and blood, or the skin and, the relationship of your skin and bones and blood with someone else's skin and bones and blood and stool and urine and hair and everything, you're not going to get anywhere. It's a dead end road, and then the road ends, and then you take another birth, and then you go down another dead end road, and then you take another birth, and you try and try and try, and you never get satisfied, ever. Abritama jnanam etena ganeno nityavarnena kama rupena konteya dusprena nalinicha. Never satisfied. Burns like fire. It creates misery. What's that other sloka? Oh yeah. Jayato visyang pungsa sangaste supajayate sangat sanjayate kama kamat krodho bhajayate krodhad bhavati sangmohat smriti brahma smriti brangshad bunina shat pranashati. You're all Bhakti Shastri students, and you all know what I'm talking about. Okay? Any other questions, comments? Who here doesn't know those slokas from Bhagavad Gita? Who doesn't know them? Okay. While contemplating the objects of the senses, one develops attachment for them. Okay? From such attachment, lust develops. From lust, anger arises. From anger, delusion. From delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, one falls down into the material pool. So graphically, the most graphic example is a man gets attracted to a woman. And its first is kind of not so serious. But then he associates with her and it gets worse. And he enjoys with her. There's no Krishna there. And then he keeps trying to enjoy, and the attraction gets stronger and stronger and stronger. And then he thinks, oh, actually, there's this other woman over there. She's more attractive to me than her. I'm kind of tired of this one. And so you go to another one. And then she becomes not so attractive anymore. And then there's, time is passing and you're getting old, and, your partner's getting old, and you want a younger one. And then you're an old man and you still have this attraction for young girls. And you become like an animal. And when you become like an animal in your consciousness, yang vapi swaram bhavam tajantyante kalevaram tam avaiti kunteya sadat tadvava bhavitaha. Whatever state of consciousness one has at the time of death, to that state he will attain without fail. So you become a dog in your next life, and you run after the female dog,
The same business, same dirty business. Okay? Hare Krishna. I'm very sorry for all the people here who don't speak English. Can you say that in Bengali? হরে কৃষ্ণ প্রভু বিশেষভাবে দুঃখিত যারা ইংলিশ বুঝতে পারে না হরে কৃষ্ণ প্রভু বিশেষভাবে দুঃখিত যারা ইংলিশ বুঝতে পারে না কারণ প্রভু ইংলিশে প্রবচন দিয়েছে Who here doesn't speak English? Ask. কে কে এখানে ইংলিশ বুঝতে পারে না তারা হাত তুলুন যারা কারা ইংলিশ বুঝতে পারে না তারা হাত তুলুন She doesn't. She doesn't. Please forgive me. Hare Krishna. প্রভু আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা চাইছেন Jai Nitai.